I request two captains please be reported here for the tossing ceremony. Captain of Zaman Boys Kaladka as well as the captain of Red Wings Kunjat Bail, please be reported here for the tossing ceremony. I request the captain of Red Wings to be reported here immediately for the toss. I request the captain of Red Wings, ದಯಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆಗಾಗಿ ನಿಮಗಾಗಿ ಜಮನ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. So toss ceremony is going on here, and a toss which is on by the captain of Zaman Boys Kaladka.
Welcome back. And the toss which is completed, and the toss which is won by the captain of Zaman Boys Color. Let's wait and see the addition of their captain, Rashid Baba. Will he going to bat first or ball first? And seems to be and a fantastic view of this cricket ground. After that, the lights are on. Looks like it's the most beautiful view of this cricket ground, and with some extra lightings. And all we are just waiting for the second semi-final. After that, one team which is qualified for the mega final, Team Torpedoes Khana, entering into the final of this prestigious Sauhardha Trophy 2023. Umpires are ready here. Umpires for this match, the field umpire Arish Padil as well as umpire Mohan Ayadi, two very good umpires. Arish Padil has got experience of more than 28 years in both in underarm and overarm cricket. Even Mohan Ayadi is a very experienced umpire, more than 15 years, and as an umpire, absolutely so far has got a fantastic career as far as the officials is concerned, the umpire is concerned. And along with these two umpires, one more experienced umpire, Roland Pinto sir, will going to be a third umpire for this match. And everything is ready for the second semi-final. Welcome back once again for all cricket lovers for the second semi-final. Looks like after the captain of Zaman Boys Kalatka won the toss, and they decided to ball first, seeing that they are on the field and they definitely wanted to ball first. So after the innings, one innings, in that middle of that innings break, we are going to do the felicitation for the players who are dominated underarm and overarm cricket. Some players are performed in both underarm and overarm cricket. We'll go into felicitated in a main stage with the appearance of some chief guests, the 7 players, the legend players to be honored, felicitated, and the main stage in the break of the first innings. And looks like the captain of Zaman Boys Kaladka, Rashid Baba, and after winning the toss, looks like is a very good toss to win, that he wanted to field first. Just he wanted to exploit the condition in the evening. Of course, it's going to be a slight bit of encouragement for the bowlers, and especially under floodlight, definitely going to be a different ball game when you compare to the game in the natural light. Sunlight is always going to be a different game when you're coming to the under floodlight game. It's not so easy, especially for the batter, and certainly it's going to be a advantage for the bowlers. And wait and see how well the bowlers of two teams will going to exploit the condition, and wait and see how well the batters of both the batsmen, both the teams will going to get some good performance in this do or die match. Absolutely, both the teams wanted to be in the final of this prestigious Sauhardha Trophy 2023, which is proudly organized by Gori Young Boys under the leadership of Alfaz, and of course this tournament is running very successfully, and in the memory of sweet memory of late Suresh Bian.
Please note, those who are watching live telecast of this cricket tournament, link will go into change here. Link will go into change here because of that short break where the 10 media, the live telecast YouTube channel will go into change the link. The new link already sent here. Please note. And under the notice of everyone, this link will go into change here. And big match is coming up. So opening batters of Red Wings, Kunjat Bail, they came to the middle, taking the respective position in the striker's end. The batter Tanzim is in striker's end, and look, Kishore is in non-striker's end. Left and right combination is always going to be very handy, and left and right combination is definitely going to be very useful if you're able to get one partnership. They wanted to get the partnership, and wait and see how well they're going to start. First ball, right on the money, right on the target. Ball almost coming into the batter, and batter tried to drive that one in the offside region, but seeing that ball is almost on the middle and leg stump, and forcibly the ball batter played that one back to bowler and not for run. A good start there from Mustafa. First ball itself is bowling with a good line. Short run up, away from us. Right arm over the wicket balls. This time going for the expansive drive, but ball just missing his bat. That's what I'm talking about. It's not an easy condition for the batter. First of all, you need to get eye in. They need to adapt to the condition. And if you wanted to get your natural stroke making, and first of all you need to settle down a little bit. And here's the two deliveries which balled very good one there from Mustafa. One is on the middle stump, and the second one is a slight a bit of outside the line of off stump. And again Mustafa, right arm over the wicket, across the line, try to swing that one, chance of run out, and a throw which is a slight a bit of wider. And batsman quickly going for the single, slight a bit of bat which is taken place. And before that, fielder from short fine leg region, Rashid Baba, trying for the run out, but that wide throw came from the fielder. So both the batters completed a very quick single. So first run came from the bat of Tanzim, and altogether first run for team Red Wings, Kunjat Bail. Both the teams played a fantastic game of cricket in the day number one, because it's not an easy journey for both the teams, because they played an excellent game of cricket. And that's why they deserve the place in the big semi-final. But the job which is not yet over. This is going to be a important match, semi-final match. Playing in a first round, second round is a different ball game. When you are coming to the semi-final, it's definitely going to be a high pressure game. And those who are able to handle the pressure, they can win the match. Again, this time Kishore wanted to sweep that one. Again, he missed it completely. But no signal came from umpire, means it's a slide a bit of inside at the bat of Kishore. Then ball hits a leg, so that one more addition. Two without loss of any wicket. Both the batters are off the mark with a single. Tanzim back on strike. The power play is on. So only two fielders outside the circle. As for the rules and regulation of power play is concerned, the two fielder wide-ish long off and one at long on. The two fielders are in the deep. Here again now. Was a lovely shot. That was an improvisation by playing the horizontal bat. Ball running down to deep third man boundary for 4 runs. This is a modern day cricket, isn't it? Each and every batsman loves to play that reverse stroke. And this time has absolutely exquisite footwork there from the batter. It's not so easy to get that one in from your bat, because the quick footwork is very, very important. And in the negation, he got that one right from the middle of the bat, and placement is so good in the negation, because it's a power play is on. A little option for the bowler to keep the fielder outside the circle. So batsman capitalizing that very well, and he got the boundary for that. 6 without loss of any wicket. Much required boundary. Welcome boundary for team Red Wings, Kunjat Bail. Mustafa balls, tries that one, but not quite getting hold up that one properly, but managed to send that one in the gap. A huge gap between bowler and the mid wicket, so that Tanzim
managed to complete that walkable single. First over completed after completion of first over, and a steady start from these opening batters of Red Wings. They got the 7. The 7, which is the jersey number of Tanzim, the same number of runs they got in the first over. And in this condition, I think it's a good start. The 7 without losing any wicket, because this is a 8 overs format of games. A lot of time for the batters to get some acceleration. Once they settle down, then they can get some acceleration in the incoming overs, especially in the slog overs. But Zaman Boys Colorka, it's very difficult to say. For Red Wings, how much runs is going to be quite enough, because everybody knows the potential of Zaman Boys Colorka. They got some formidable batting department, some destructive batters in the side of Zaman Boys Colorka. But question raising here is that in the under floodlight, how much they are effective, how much they can be effective, and that might be the question mark here raising in this particular semi-final. Red Wings also got some good bowling department, so Zaman Boys knows that they wanted to restrict the opposition less than 50, then only they can win the match. And from the far end, it's going to be a start of the second over. The first ball, driven that one uppishly and quite safely in the gap. One bounce, stopped by the fielder. Good stop by the fielder. What could be a certain boundary, but the fielder did a great job. And have a look at it on replay, and just up and over. And such a good stroke to play in the power play. And the fielder down at deep long off did a great job to stop the boundary. And a couple of runs which is taken in between Daibas Tanzim. With that couple of runs, Kobar moves on to 9 without loss of any wicket in the over. Number 2 is in progress. Taufik again back to his bowling mark. This time across the line, he swings that one. Appeal for leg before wicket, but umpire says I can't see because you are coming right in front of me. So that's very, very important that bowler to avoid that one. So once he delivers the ball, on his follow through, you need to go to your left, not to right. When you are coming to your right, means you are coming right in front of umpire. So that's very difficult for umpire to judge the leg before wicket. That's why umpire Harish Padil saying that the bowlers not to come in front of me. So he's just changing his angle. He's bowling now round the wicket to the left hand batter. Scoreboard is 10 on the board without loss of any wicket. Taufik again. Short enough. Right arm round the wicket. This time misdirected delivery, which is outside the line of leg stump. This is the problem when there is a left and right combination. The bowler have to change the line and length. When there is the strikes are rotating, they need to change the line and length, and that could be a good delivery for the right-hander batsman, but for the left-hand batsman that could be a wide. Again, the wicketkeeper fails to collect the ball. Chance of run out there, but the throw is not really having enough power, so that batter completed a single here in the form of a leg, in the form of bye. The wicketkeeper fails to collect the ball. Not an easy condition even for the wicketkeeper. Under floodlight. 12 on the board. 12 for the loss, without loss of any wicket. In the over, number 2 is in progress. Outside the line of off time, batsman tried to reach that one, but umpire rightly so, Harish Padil, no hesitation to call that wide. That ball, oh my goodness, looks like Tanzim has got a little bit problem with his finger. Maybe he wanted to try to cut the ball. By doing that, maybe hit the bat hard into the ground, so that it looks like he is feeling a lot of pain after that attempt. Now quickly they're calling for the first aid, maybe for the relief spray, and Tanzim is a very good opener batter for the side of Red Wings, Kunjat Bail. So coming back to this cricket tournament, what a fantastic tournament. This is a day number 3 of this prestigious cricket tournament. After that successful 2 days, the first day, which is completed very successfully in Wednesday, and the second day, the Thursday, and fantastic day of cricket. We are witnessing some
Fantastic game of cricket. Now it's a final day of cricket. Just one match which is remaining to decide which team will go into enter the final. Already one team, Torpedoes Khana, they're waiting for the winner of this match. The second semi-final is in progress. Taufik again, right arm over the wicket balls to Tanzim. Oh, that might be again that ball. The appeal coming from wicketkeeper behind us. But the wicketkeeper has got a ball in his hand. That means there's nothing is much happened in that one. Maybe the wicketkeeper behind the stump got an opportunity to remove the bails, because might be the wicketkeeper batter slight a bit of lost his balance, tried to flick that one off his legs down to square leg region, and no damage done. Score remains on 13 without loss of any wicket. Taufik again. This time again appeal for leg before wicket. Again umpire not interested, but very much interested to lift his legs to signal the leg by. With the addition of that leg by, score moves on to 14 on the board without loss of any wicket. Taufik bowling a big over here, inclusive of the two wide deliveries. It's the second over is in progress. The 14 on the board without loss of any wicket. Taufik round the wicket. This time Kishore wanted to get that one very fine. He's looking for the improvising switch it, but missed it completely. 2 overs completed. After completion of over number 2, Red Wings, Kujat Bail, 2 without 14 on the board without loss of any wicket. They're going exactly 7 runs per over. So in the similar run rate, if he goes on batting till 8 overs, the projected score will be a 56, and that might be the good score in this condition, but very difficult to say. Will it going to be quite enough against the fantastic batting department of Zaman Boys Kalladka. So after that power play, straight away the captain of Zaman Boys Kalladka wanted to introduce their leg spin bowler, one of the successful leg spin bowler in the side of bowling department of Zaman Boys Kalladka. Wait and see how he will going to be effective. Majid, the leg spinner, is in action. Just I want to see the field set. There is a fine leg inside the ring. The square leg going back to deep square leg in front of square. The one fielder now coming towards a square leg, maybe is going back towards a deep backward square leg behind the umpire. That one fielder is going towards a mid wicket. There is a short mid wicket, deep long on, and in the offside region there is a backward point. One fielder stationed at short extra cover, one at a deep cover point, and one fielder at a deep long off. Altogether, more protection has been given in the onside region. The 5 in the off, 5 in the on, and 4 in the off. Majid to bowl the first ball from the commentary box end. Right arm over the wicket balls. This time wide outside the line of off-time batsman. Tried to reach that one. By doing that, he didn't got enough timing in that stroke, but quite enough for him to rotate the strike. And he picked up a single score. Scoreboard now moves on to 15 on the board. 15 without loss of any wicket in the over number 3rd is in progress. Different field set is required whenever the strike switch is rotated, because the left and right combination, slight a bit of headache for the captain. So when there is a left and right combination, not only need to change the line, the bowler, but need to change the field set. Majid now bowling round the wicket, right arm. This time just up and over the head of that cow point fielder. They're running hard. Before the fielder to going there, to reach there, ample time for the batter to complete that couple of runs. So quite deliberately the batter played that one in there, seeing that cow point inside the ring. There is no fielder in the deep cow point. Just going over the top of that fielder, and got ample time to complete that couple of runs. This is a sensible cricket which is required when it's very hard to get boundaries and sixes. This kind of sensible batting definitely going to help some definitely going to get
some acceleration in the run rate. Again, I wanted to get that one into the backup point region, but he fails to defeat that infield because of ball which is not really coming to the bat, and especially the Majid, the bowler like Majid, bowling a slow leg spin delivery, and the batsman need to be very patient. Again, 18 on the board without loss of any wicket. Good foundation laid by the opening batters. Again, across the line, wanted to hit that one onto square leg region, but missed it completely. And Majid is enjoying the condition under floodlight. Is bowling a very good leg spin bowling performance so far. 4 balls and 4 runs conceded. Lovely delivery. Misjudgment by the batter. Tanzim thought it might be a wide, but ball is well within the reach of him, couple of inches, and he missed it completely. And wicketkeeper behind the stump did the rest back to bowler. 18 without loss of any wicket. This time full toss, and batsman capitalizing that one. Absolutely juicy full toss. And Tanzim once again not really missing the opportunity to swing his arm. Premeditated switch it. Already he's made his mind that he was going to play the switch it, and ball which is came in such a height that he can enjoy that strokes. Juicy full toss there from Mujib. This is a Majid in fact, correction. This is one of the big problem for the leg spinner. Sometime tried to bowl some quicker one, he couldn't manage to grip the ball properly, and a full toss which just came into the batter, and batter completely capitalizing that one. 22 on the board after completion of over number 3. Red Wings Kunjat Bail. Looks like they got they definitely in a comfortable position without losing any wicket. They got a 22 runs. Then they can get some acceleration, having all the wickets in hand. So no change in bowling from the far, and Tawfiq to continue from the late Suresh B and banner end. This tournament which is organized with the lovely memory, sweet memory of Suresh Bayan, one of the unforgettable personality who contributed a lot for Gori young boys. Even though he is not with us physically, but I think his sweet memory is always remaining in the mind of every cricket lovers. It's 22 without loss of any wicket. The 4th over is going to start from the far end. Tawfiq to Kishore. So far, Zaman Boys fails to break this partnership. 22 runs of partnership for the first wicket. This time switch it comes into play, and played it down to deep backward point region before the fielder from the ring to run back towards backward point region. Ample time for the batter to complete the 2 valuable runs. With that valuable runs, score numbers on to 24 without loss of any wicket. Even though this innings is not inclusive of big shots like boundaries and sixes, but both the batters are playing as for the condition required. One boundary so far in this partnership. Wide call by umpire. One more addition. 25 comes up. 25 comes up here for Red Wings Kunjat Bail. The both opening batters are looking so good so far. Tawfiq balls to Kishore. Bowler's back drive, but they're going for the single. Again, the opportunity is created for the run out, but Azim there in the short mid-on region fails to return the ball quickly. Then the batter has got opportunity to complete the single. It's 26 without loss of any wicket, and the over number 4 is in progress. So very good number of crowds gathered here in UCG cricket ground, enjoying the game of cricket. After this match, the final will go into play, and the middle of this innings. In that break, we are going to have a felicitation ceremony, and again that ball is going down the leg stump. Nothing much to do with the delivery. The batsman rightly so left the ball, and umpire signaled wide. So with that wide, scoreboard numbers on to 27 without loss of any wicket. Tawfiq, right arm over the wicket, balls again. The batter tried to make the room to play the shot. That's why the bowler following the batter.
ball around his legs, and so that very difficult for the batter to get that proper cricketing stroke. Slight a bit of struggle in the negation. One more addition. With the addition of that single, score was under 28 on the board without loss of any wicket. This time Kishore wanted to drive that one. Slide a bit of fumble from Rashid Baba down at short third man, so that batter completed a single here. It's 29 without loss of any wicket. The very good partnership is in progress here for Red Wings Kunjat Bail. Again, Taufik right arm over the wicket. This time it's going for the drive, not quite getting hold of that and properly. But managed to get the single 30 on the board. Zaman Boys colored ka in that tournament, Adi Shakti cricket tournament, which is in progress in Nehru Maidan. In the first day, they are defeated in the semi-final against Marigudi, and one of the thriller match, the match which is ended in tie. This time directed. This time directed. Now wait for the umpire signal. Now that the first time in this semi-final, umpire, square leg umpire, referring for the third umpire to get the decision of that run out. When there is a directed, it always going to be a close call. That's why umpire asking for the third umpire, Roland Pinto, to give the decision. And then now just need to wait for the decision of third umpire, whether it's going to be out or not out. But here is team Red Wings are looking so good so far. The 4 overs which is completed, but we need to get the scoreboard because decision which is pending, and just like we're talking about Zaman Boys Kalladka after they lost their semi-final in the today. Adinatheshwara Trophy 2023, and Zaman Boys Kalladka, they lost the match. We just got information that the match which is finished in tie, and in super over they lost the match, and in this Sauhardha Trophy, wait and see how well they're going to come back, bounce back. Even Red Wings has also wanted to come into the finals of this prestigious Sauhardha Trophy 2023. And so far, Gopi, 4 overs completed. And I think the both opening batters are laid the foundation, and especially considering the condition under floodlight, 30 plus runs in first 4 overs. I think it's a good score, and considering the fact that without losing any wicket, they got 30, and they can get some acceleration in incoming overs. And at the same time, Red Wings knows that they're playing against Zaman Boys Kalladka, one of the best batting department what has got in a local pool, and that's why they wanted to get as much run as possible in this semi-final. Exactly, सतीश, जैसा कि आपने फरमाया, इस वक्त 4 ओवर में 30 रन इन हालातों में अंडर दिस फ्लड लाइट कंडीशन एक बेहतर शुरुआत यहाँ पर कहलाएगी। और जहाँ तक सवाल है, इस वक्त 30 रन बन चुके हैं। तंजीम और किशोर एक बेहतर बल्लेबाजी करते हुए एक बेहतरीन आरंभिक साझेदार यहाँ पर दे चुके हैं। 4 ओवर का खेल बाकी है, और जहाँ तक 4 ओवर का खेल का सवाल है, इस वक्त उन्हें कम से कम 30 से 40 रन जरूर बटोरने होंगे, क्योंकि ज़मान बॉयज़ के पास शक्तिशाली बल्लेबाजी का लेने पर रशीद बाबा जैसे विस्फोटक बल्लेबाज मौजूद है, तो उन पर अगर दबाव बनाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा रन बटोरने के, कम से कम अपनी टीम के आंकड़े को 60 के आसपास या 60 के पार इस वक्त करना होगा। प्रोजेक्टेड स्कोर इस वक्त दिखा रहा है 62 का, लेकिन ऐसा कहना पड़ेगा बचे हुए 4 ओवर में उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा रन यहाँ पर बटोरना होगा इस मैच में एक बेहतर स्थिति पर जाने के लिए। तो 4 ओवर का खेल इस वक्त बाकी है। दूसरा सेमीफाइनल मैच इस प्रतिष्ठित प्रेस्टीजियस सौहार्दा ट्रॉफी 2023 के अंतर्गत यहाँ पर खेला जाता हुआ, और निश्चित रूप से यहाँ पर एक त्यौहार भरा माहौल छा चुका है, फेस्टिवल एटमॉस्फेयर जिसे कहते हैं। और जो मैदान के चारों ओर जो वृक्ष है, उस वृक्ष पर जो कि जिस तरीके की बत्तियाँ इस वक्त जलाई गई है, लाइटिंग से वृक्ष को सजाया गया है, निस्संदेह काबिल तारीफ है। रंग बिरंगी मिनिएचर लाइट्स जो कि यहाँ पर उस वृक्ष की शोभा को और बढ़ाते हुए, और कुल मिलाकर ऐसा कहना पड़ेगा
फ्लडलाइट्स की झगमगाती हुई रोशनी इस मैदान को चकाचौंध इस वक्त कर चुके हैं और इस रोशनी तरह अंडर दिस फ्लडलाइट ये श्रृंखला एक बेहतरीन प्रगति यहाँ पर करती हुई सौहार्दा ट्रॉफी 2023 के नाम पर। ही इज गॉन। तो पहला विकेट यहां पर गिर चुका है। तंजीम आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए रनआउट के रूप में और 30 रनों पर पहला विकेट यहां पर गिर चुका है। इट्स 30 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 ओवर्स और एक बेहतर साझेदारी निभाने के बाद वो पेविलियन इस वक्त वापस लौट चुके हैं। तो 4 ओवर का खेल है जो कि इस वक्त बाकी है और पहला विकेट गिरने के बाद तंजीम का जहां तक सवाल एक बेहतर बल्लेबाजी निभाने के बाद वो पेविलियन वापस लौट चुके हैं। पहला विकेट यहां पर गिर चुका है और इस बीच नए बल्लेबाज का आगमन यहां पर होता हुआ। न्यू बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल। जमशीर इस वक्त नए बल्लेबाज के रूप में, जबकि गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए माजिद नया ओवर उनकी पारी में यहां पर शुरू होता हुआ। तो फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट यहां पर चलती हुई और माजिद इस वक्त नया ओवर प्रारंभ करते हुए। 4 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर मौजूद। मिड ऑफ पॉइंट, मिड ऑफ गली, शॉट थर्ड मैन और मिड विकेट इस वक्त तैनात और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त जमशीर गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए। बाएं हाथ दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, बेहतर गेंद थी और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। स्कोर रुक चुका है 30 रनों पर। निस्संदेह इस वक्त जमन बॉयज का लड़का को इस वक्त कमबैक करना है गेंदबाजी में और एक बार फिर से तैयार। स्वीप किया इस वक्त गेंद को किशोर ने, गेंद जाती हुई डीप मिड विकेट पर और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 31 रनों पर। इट्स 31 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। और फिर से एक बार गेंदबाज माजिद इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए। नए बल्लेबाज इस वक्त जमशीर सामना करने के लिए तैयार। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट यहां पर चलती हुई। दर्शक अच्छे खासे इस मैदान पर भरे हुए। रात का वक्त लगभग 8 बज चुके हैं और यहां पर दूसरा सेमीफाइनल मैच इस श्रृंखला के अंतर्गत यहां पर खेला जाता है। ये गेंद इस बार गेंद को उछाला, गेंद हवा में, कवर पॉइंट फील्डर गेंद तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन इससे पहले कि एक्स्ट्रा कवर फील्डर गेंद तक पहुंचकर गेंद को फील्ड करे बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। ऐसा कहना पड़ेगा, नॉट क्वाइट गेट दैट वन राइट फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट एट द लास्ट मोमेंट बट ही गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 32 रनों पर। फिर से एक बार माजिद गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए। किशोर सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद स्वीप करना चाहा, परिवर्तन के तौर पर धीमी गेंद थी। गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं है और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथ में। लगभग गेंद जमीन के सहारे उन्होंने फेंकी थी और आखिरकार इस गेंद पर बल्लेबाज को रन नहीं मिला। तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है 32 रनों पर। 32 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। एक बार फिर से गेंदबाज की गेंद ऑन साइड पर स्विंग करना चाहा, बेहतर तरीके की विकेट कीपिंग और एक बार फिर से तीसरे अंपायर के लिए इस वक्त तक आ पड़ा है। विकेटें उखाड़े गए थे, जब विकेटें उखाड़े गए तब देखना यह है कि बल्लेबाज का बैकफुट क्रीज से लिफ्ट हो चुका था या नहीं, लेकिन बेहतर तरीके की विकेट कीपिंग इस वक्त विकेट कीपर ने की है और देखना यह है कि यहाँ पर क्या निर्धारित तृतीय अंपायर देते हैं। तो यहाँ पर एक और बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला का आयोजन होने जा रहा है। नूतन फ्रेंड्स उर्वा
ದಿವಂಗತ ಆಸ್ಟಿನ್ ಮೊಂತೆರೋ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ನೂತನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಅಂಡರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟವು ದಿನಾಂಕ 3-4-5-6-2023 ಮೇ ಅಂದು 3-4-5-6 ಮೇ 2023ರಂದು ಈ ಉರ್ವಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವುದು. ಅದೇ ರೀತಿ 3 ಮತ್ತು 4ರಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ತಂಡಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ 16 ತಂಡಗಳು ಸ್ಥಳೀಯ ತಂಡಗಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 16 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲು 8 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ನಗದು 30,333, ಅದೇ ರೀತಿ ನೂತನ್ ಟ್ರೋಫಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ 15,555 ಹಾಗೂ ನೂತನ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ತಂಡಗಳ ಪಂದ್ಯಾಟ ದಿನಾಂಕ 5ರಂದು ಜರುಗಲಿರುವುದು ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ. ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ 10 ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿವೆ ಹಾಗೂ ಈ ಪಂದ್ಯವು 8 ಓವರ್ಗಳದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನವು 20,222 ಹಾಗೂ ನೂತನ್ ಟ್ರೋಫಿ ನಾಟ್ ಔಟ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ ಹಾಗೂ ನೂತನ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ನಗದು 11,111 ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಆಯ್ದ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ದಿನಾಂಕ 6/5/2023 ಅಂದರೆ 6 ಮೇ 2023ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವುದು. ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ 8 ತಂಡಗಳು ಮಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ 8 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯು 10 ಓವರ್ಗಳದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ರೂಪಾಯಿ 40,444 ಹಾಗೂ ನೂತನ್ ಟ್ರೋಫಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ನಗದು 15,555 ನಗದನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗುವುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಆಸಕ್ತರು ದಯವಿಟ್ಟು ನೂತನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವ ಇದರ ಸಂಘಟಕರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ವಿಶೇಷತೆ ಏನೆಂದರೆ 3 ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡಲಾಗುವುದು. ಅಂಡರ್ ಫ್ಲಡ್ ಲೈಟ್ 3 ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳನ್ನು ಆಡಲಾಗುವುದು. ಸ್ಥಳೀಯ ತಂಡಗಳ ಪಂದ್ಯಾಟ, ಮಾಸ್ಟರ್ ತಂಡಗಳ ಪಂದ್ಯಾಟ ಹಾಗೂ ಆಯ್ದ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಅಂಡರ್ ಫ್ಲಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಲಾಗುವುದು. ಹಾಗೂ ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯು ಮೇ ತಿಂಗಳ 3ರಿಂದ 6 ತಾರೀಕಿನವರೆಗೆ ಜರುಗಲಿರುವುದು. ನೂತನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ 2023. धन्यवादಗಳು. तो यहाँ पर देखना यह है कि बल्लेबाज आउट हो चुके हैं, बच चुके हैं. No doubt is the call and the batsman survived. तो विकेट यहाँ पर बच चुका है और यहाँ पर स्कोर है 34 रन एक विकेट के नुकसान पर. 5वां ओवर यहाँ पर प्रगति पर. निस्संदेह बराबर का टक्कर यहाँ पर इस वक्त हमें देखने को मिल रहा है. रेड विंग्स कुंजत बैल और जमन बॉयज का लड़का के बीच में इस सौहार्दा ट्रॉफी 2023 इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत इस द्वितीय सेमीफाइनल मैच में. और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, 5 overs completed, 34 on the board, 1 wicket lost, and a 6th over starts, and the bowler starts the fresh proceedings from that side, and that means Suresh BNN is Rauf. Rauf इस वक्त गेंदबाजी करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज जमशीर के लिए. और फील्डिंग में यहाँ पर जमावट चलती हुई काफी दूर दूर तक फैला हुआ क्षेत्र रक्षण हमें यहाँ पर दिखाई देता हुआ. और ओवर की पहली गेंद लेकर रऊफ इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए नई ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार. अपनी ओवर की अगली गेंद, अपनी ओवर की पहली गेंद कहना पड़ेगा. दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए
दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद ऑन साइड पर उछालना चाहा, गेंद पोजीशन फाइन लेग पर, रन आउट का खतरा इस बीच, लेकिन अंतिम क्षण में गेंदबाज ने गेंद को विकेटों पर शाइन करना मुनासिब नहीं समझा और आखिरकार बल्लेबाज इस गेंद पर बच चुके हैं। तो 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है और छठे ओवर के प्रारंभ पर स्कोर है इस वक्त 35 रन 1 विकेट के नुकसान पर। द इक्वल बैटल इज नाउ स्टिल कंटिन्यूइंग हियर बिटवीन दीज टू टीम्स टू क्वालिफाई फॉर द ग्रैंड फिनाले ऑफ दिस कंपटीशन टू फेस टोपेडोस्काना। और इस बीच गेंदबाज रऊफ गेंदबाजी करेंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज किशोर के लिए, जो कि एक बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन यहां पर देते हुए। ये गेंद फुल टॉस, गेंद कौन साइड पर उछालना चाहा, गेंद पहुंची इस वक्त शॉर्ट थर्ड बैन पर, 1 रन मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 36 रनों पर। 13 रनों पर किशोर पहुंच चुके इस 1 रन के साथ, जबकि जमशीर इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए 2 रनों पर। रन से ज्यादातर सिंगल्स के रूप में यहां पर बनते हुए और फिर से एक बार गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद इस बार बेहतर गेंद, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन, लगभग बल्ले के 3 का टिपक खाती हुई नॉन स्ट्राइक एंड पर गेंद पहुंची, थ्रो पहुंचा था शॉर्ट थर्ड बैन फील्डर का, लेकिन इससे पहले बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 37 रन बन चुके हैं। छठा ओवर इस वक्त प्रगति पर, 15 गेंदें अब कुल मिलाकर उनकी पारी में बाकी, 15 बॉल्स लेफ्ट इन देयर इनिंग्स और गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। बाएं हाथ के बल्लेबाज किशोर इस वक्त सामना करते हुए। ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया खूबसूरती के साथ, वाइड लॉन्ग ऑफ पर गेंद पहुंची और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका। 38 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट एंड दिस इज द 6th ओवर इन प्रोग्रेस इन देयर इनिंग्स। ये दोनों बल्लेबाज एक साझेदारी पार्टनरशिप निभाने की पूरी कोशिश यहां पर करते हुए और फिर से एक बार गेंदबाज रऊफ। ये गेंद इस बार बॉल आउट, gone for a big one, missing the line completely and the ball stuck to his middle leg stump. Bells are disturbed and that is the wicket number 2 now. Jamshir departs and Red Wings Kunjat Bail are now lose their 2nd wicket. Have a look at this in the replay. देखिए किस तरीके से गेंद को उछालना चाहता, चूंकि गेंद स्टंप्सों पर टकराई। 38 रनों पर दूसरा विकेट गिर चुका है और जमशीर 3 रन बनाने के बाद आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए और रेड विंग्स कुंजत बैल इस वक्त 38 रनों पर अपना दूसरा विकेट हो चुका है। इट्स 38 for 2। तो संतोष का आगमन यहाँ पर होता हुआ और वो इस वक्त सामना करेंगे रऊफ की गेंदों का। तो 38 रनों पर दूसरा विकेट इस वक्त तक हो चुका है RWK यानी रेड विंग्स कुंजत बैल और इस बीच ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार रऊफ गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, जबकि दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार संतोष। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट यहाँ पर चलती हुई, एक धीमा क्रिकेट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। धीमी ओवर रेट इस वक्त कायम रखते हुए गेंदबाज जमन बॉयज के और यहाँ पर जहाँ तक सवाल है गेंदबाजी का तो अपनी ओर की अगली गेंद लेकर रऊफ इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद स्वीप करना चाहा, लगभग जमीन के सहारे थी गेंद, सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति, 38 रन बन चुके हैं। 38 for the loss of 2 wicket after completion of 6 overs, exactly 6.33 the present run rate is now going on here for Red Wings कुंजत बैल। और निस्संदेह 2 ओवर का जो खेल बाकी है, इस 2 ओवर के खेल में रेड विंग्स को कम से कम 20 से 25 रन बटोरने होंगे अगर उन्हें एक चुनौती भरा स्कोर यहाँ पर खड़ा करना है। तो क्योंकि जमन बॉयज के पास जो बलाढ्य बल्लेबाजी का लाइनअप है, रशीद बाबा जैसे घातक बल्लेबाज उनमें शामिल हैं, तो यहाँ पर उनको उन बल्लेबाजों के ऊपर दबाव बनाना है उनके गेंदबाजों को। तो सबसे पहले यहाँ पर रेड विंग्स कुंजत बैल के बल्लेबाजों को ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर बनाना होगा, जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका हूँ। और 7वां ओवर यहाँ पर शुरू होता हुआ, गेंदबाज नया ओवर इस वक्त प्रारंभ करते हुए किशोर सामना करने के लिए तैयार। और जहाँ तक किशोर का सवाल है, इस वक्त सेंसिबल बल्लेबाजी वो अपनाते हुए 14 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए 16 गेंदों का सामना कर चुके हैं मुस्ताफा। गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए, फील्डिंग में जमावट यहाँ पर चलते हुए
अभी भी काफी दूर दूर तक पहला क्षेत्र रक्षण हमें यहाँ पर दिखाई देता हुआ। कुल मिलाकर 4 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर तैनात। और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त किशोर के लिए मुस्तफा फील्डिंग में जमावट करने के बाद ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ऊपर तक विकेट गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए ओवर की पहली गेंद। स्वीप करना चाहा, पैरों पर टकराई, लाइन के बाहर टिप्पा खाती हुई, 1 रन मिलेगा। अपील को नकार दिया सही तरीके से अंपायर ने और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 39 रनों पर। इट्स 39 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 7 इन प्रोग्रेस एट द स्टार्ट ऑफ द 7th ओवर। इन फैक्ट एक बेहतरीन लाइव टेलीकास्ट इस वक्त किया जा रहा है 10 मीडिया पर और निश्चित रूप से कहना पड़ेगा ये श्रृंखला एक बेहतरीन प्रगति यहाँ पर करते हुए सौहार्दा ट्रॉफी 2023 के नाम पर जनाब अल्फाज इनके नेतृत्व में दिवंगत सुरेश BN इनके मधुर याद में इस श्रृंखला का, इस टूर्नामेंट का शानदार तरीके से यहाँ पर आयोजन किया गया है। और मुस्तफा यहाँ पर गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, संतोष इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, कुछ हद तक जमावट करने के बाद अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज संतोष के लिए ये गेंद इस बार बेहतर, एब्सोल्युटली गुड वन, बट विकेट कीपर मिसेस एंड द बैट्समैन क्रॉस्ड ओवर फॉर द सिंगल एंड गेट इट कंफर्टेबली एट लास्ट। बाई का इशारा, बेहतर गेंद थी, गेंद पर स्ट्रोक्स खेलने में चूके, लेकिन विकेट कीपर गेंद को विकेटों के पीछे ठीक तरह से गैदर नहीं कर पाए और जब तक गेंद को बैकअप किया जाता शॉर्ट थर्ड मैन पर 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका। 40 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर। इट्स 40 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 7 इन प्रोग्रेस। और किशोर इस वक्त स्ट्राइक पर आ चुके हैं 14 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए 17 गेंदों का अब तक उन्होंने सामना किया। कुल मिलाकर ऐसा कहना पड़ेगा एक बेहतर शुरुआत बल्लेबाजी के जरिए अब तक वो अपने टीम के लिए दे चुके हैं। सामना करने के लिए तैयार मुस्तफा की ओवर की अगली गेंद का दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए स्वीप इस वक्त किया, गेंद को गेंद जाती हुई बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में फील्डर गेंद तक पहुंचते हुए डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के अंदर जब तक गेंद को फील्ड करे बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 42 रनों पर। इट्स 42 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। सेंसिबल क्रिकेट यहाँ पर अपनाते हुए ये दोनों बल्लेबाज, वो जानते हैं इस वक्त चौके या छक्के लगाना उतना आसान नहीं है इन हालातों में, क्योंकि आमतौर पर इस मैदान का स्वभाव ऐसा है कि रात होने के बाद यहाँ पर हवा का रुख काफी हद तक कम हो जाता है। तो इस वजह से इस बार खूबसूरती के साथ गेंद को स्कूप किया, बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा से गेंद इस वक्त बाहर हो चुकी है 4 रनों के लिए। सीमा रेखा के दीवार पर टकरा चुकी है कहना पड़ेगा और जीत और कोशिश करने के बावजूद यहाँ पर इस गेंद को रोकने में सफल। देखिए किस तरीके से काफी लंबा दौड़ उन्होंने लगाया था, जीतोड़ कोशिश उन्होंने जरूर की थी लेकिन आखिरकार गेंद को रोकने में असफल और गेंद सीधे सीमा रेखा के दीवार पर टकरा चुकी है 4 रनों के लिए। तो इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 46 रनों पर। बेहतरीन स्ट्रोक इम्प्रोवाइजेशन इस वक्त किशोर द्वारा चौका प्राप्त करते हुए और इस वक्त हालात के अनुसार इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए क्रीज पर मौजूद है दोनों बल्लेबाज। मुस्तफा एक बार फिर से तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए कम से कम 12 से 14 बार गेंद को जमीन पर पटकने के बाद ये गेंद स्वीप किया इस वक्त, नॉट क्वाइट पिटली गेट, इनफैक्ट दे गॉन थ्रू फॉर अ सिंगल एंड गेट इट कंफर्टेबली एट लास्ट। स्वीप करना चाहता, ठीक तरह से स्वीप नहीं कर पाया लेकिन 1 रन उन्हें जरूर मिला। वहां पर विकेट कीपर गेंद को टटोलते रह गए और आखिरकार बल्लेबाज इसका फायदा उठाकर 1 रन यहां पर प्राप्त करने में सफल। 47 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 7 इन प्रोग्रेस। स्टिल अ बॉल लेफ्ट इन दिस ओवर और यहां पर स्टिपुलेटेड टाइम, निगदित समय, निर्धारित समय जो कि समाप्त हो चुका है। तो अंपायर ने इस वक्त इशारा किया और एक क्षेत्र रक्षक को इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर बुला लिया जाएगा। तो अब 20 गज के दायरे के बाहर सिर्फ 4 मात्र क्षेत्र रक्षक मौजूद है और यहाँ पर इस ओवर के अंतिम गेंद को लेकर इस वक्त गेंदबाज मुस्तफा तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट संतोष के लिए ये गेंद इस बार रिवर्स शॉट खेलना चाहा, चूंकि गेंद को ठीक तरह से खेल नहीं पाए। विकेट कीपर ने डाइविंग लगाते हुए अपने दूसरे प्रयत्न में आगे की ओर गेंद को फील्ड कर लिया और ओवर नंबर 7 की समाप्ति हो चुकी है। 7 overs completed, 47 runs on the board, 2 wicket lost and just a last over left. 49 fours and 64 sixes hit in this tournament so far and still one match to go right after this match and that is a grand finale. So
लास्ट ओवर रिमाइनिंग इन द इनिंग्स, अंतिम ओवर का खेल बाकी। और हमसे दूर वाले छोर से यानी सुरेश बी एंड की ओर से गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए गेंदबाज और इस वक्त सामना करते हुए किशोर, जो कि एक बेहतरीन पारी अपने टीम के लिए खेलते हुए और सामना करने के लिए तैयार, कुछ हद तक थके मांदे यहाँ पर नजर आते हुए अपनी टीम की पारी का अंतिम ओवर की पहली गेंद का सामना करने के लिए तैयार रहा। और रऊफ इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए, जहां तक रऊफ का सवाल, अपने पहले ओवर में बेहतर गेंदबाजी का प्रदर्शन उन्होंने दिया था, सिर्फ 4 रन उन्होंने प्रदान किए थे, 1 विकेट भी उन्होंने प्राप्त किया था और अपने ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार था। इन्हें तो ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार स्वीप किया, गेंद को खूबसूरती के साथ डीप मिड विकेट पर गेंद पहुंचे, फील्डर गेंद तक पहुंचते हुए दूसरा रन लेना चाहते हैं लेकिन नहीं मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 48 रनों पर। इट्स 48 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 8th एंड फाइनल ओवर। और फिर से एक बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट रऊफ इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए संतोष सामना करने के लिए तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार गेंद को उछाला खूबसूरती के साथ इनटू द गैप एज वेल, इनफैक्ट इट्स अ ब्रिलियंटली स्टॉप जस्ट इनसाइड द वे, इनफैक्ट दे कम बैक फॉर द सेकंड, दिस कुड बी ट्रबल, लेकिन अंतिम क्षण में अंपायर ने इशारा किया कि तृतीय अंपायर को यहां पर निर्धारण देना है। And that is an absolutely fantastic stop made by the Whiteish long on fielder। जैसे ही गेंद सीमा रेखा को पार करे अपने ऊपर की ओर छलांग लगाते हुए गेंद को उन्होंने फील्ड कर लिया और थ्रो किया इस वक्त नॉन स्ट्राइक रन पर। हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले, देखिए किस तरीके से गेंद को इस वक्त उछाला था और गेंद आफ्टर फर्स्ट बाउंस लंबे उछाल के बाद इस पहले की सीमा रेखा को पार करके गेंद को रोक दिया गया, बेहतरीन फील्डिंग द्वारा फील्डर द्वारा थ्रो पहुंचा और जब विकेट उखाड़े गए थे तब देखना यह है कि बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके थे या नहीं। तो तृतीय अंपायर देखना यह है कि इस वक्त क्या निर्धार यहां पर देते हैं। सौहार्दा ट्रॉफी 2023 प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला जनाब अल्फाज इनके नेतृत्व में इस वक्त आयोजन किया जा रहा है। गोरी यंग बॉयज पांडेश्वर इनके सहयोग से दिवंगत सुरेश बियन इनकी मधुर याद में इस श्रृंखला का शानदार तरीके से आयोजन इस वक्त किया जा रहा है और इस श्रृंखला का इस टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल मैच इस वक्त प्रगति पर और यहाँ पर देखना यह है कि बल्लेबाज बच चुके हैं या नहीं।
Not out is the call and the batsman survived. और इस एक रन के साथ द 50 कम्स अप फॉर रेड विंग्स कुंजत बैल। 50 रन यहाँ पर पूर्ण हो चुके हैं और इस गेंद पर बल्लेबाज बाल बच चुके हैं। तो कुल मिलाकर 4 गेंदें अब बाकी उनकी पारी में और गेंदबाज रऊफ इस वक्त गेंदबाजी करेंगे। दाहिने हाथ के बल्लेबाज संतोष के लिए अपनी अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार। रऊफ दाहिने हाथों पर द विकेट संतोष के लिए। ये गेंद इस बार चिप किया लॉन्ग ऑन पर, लेकिन सीधे फील्डर के हाथों में। प्लेसमेंट वाज टू रॉन्ग एंड बिकॉज ऑफ दैट ही पेड द पेनल्टी फॉर दैट। लॉन्ग ऑन के हाथों में, लॉन्ग ऑन के फील्डर के हाथों में गेंद पहुंची और आखिरकार उन्होंने कोई गलती नहीं की। 50 रनों के ऊपर तीसरा विकेट गिर चुका है। संतोष आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए 2 रन बनाने के बाद और तीसरा विकेट यहां पर खो चुका है रेड विंग्स कुंजत बैल 50 रनों के ऊपर। इट्स 50 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। तो नए बल्लेबाज सफवान का इस वक्त आगमन होता हुआ और रऊफ इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट। ये गेंद इस बार बेहतर गेंद थी, ऑन साइड पर गेंद को मोड़ दिया। इस वक्त मिड विकेट पर गेंद जाती हुई 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा। दूसरा रन लेना चाहते हैं लेकिन एन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींचते हुए सुरक्षित 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। 51 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 18 प्रोग्रेस। जस्ट 2 balls लेफ्ट इन ओवरऑल कैलकुलेशन इन देयर इनिंग्स। और गेंदबाज किशोर इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए, माफ कीजिए, किशोर इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, जबकि रऊफ इस वक्त गेंदबाज आगे बढ़ाते हुए। जहां तक किशोर का सवाल है, 22 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए किशोर, ही इज बैटिंग ऑन 22। किशोर फेसिंग रऊफ और रऊफ इस ओवर में 5वीं बार दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। एक फील्डर को इस वक्त गली क्षेत्र पर तैनात किया गया है। बैकवर्ड थर्ड बैन से 20 गज के दायरे के अंदर और इस बीच ये गेंद स्वीप किया और सीधे गेंद पहुंची स्क्वायर लेग फील्डर के हाथों में। स्वीप किया था लेकिन प्लेसमेंट गलत था और शॉर्ट स्क्वायर लेग और शॉर्ट मिड विकेट के फील्डर जो खड़े हुए थे बीच में, शॉर्ट स्क्वायर लेग और शॉर्ट मिड विकेट फील्डिंग प्लेसिंग के बीच में जो फील्डर खड़े हुए थे उन्होंने इस कैच को लपका, कुछ हद तक छलांग लगाते और किशोर की बेहतरीन पारी पर पर्दा गिर चुका। सो 22 रन स्कोर्ड बाय किशोर एंड आफ्टर बीइंग प्लेइंग अ सेंसिबल नॉक, 21 runs scored by Kishore and after being playing a sensible knock for their side, he is back into pavilion and a good innings came to an end and a fine innings came to an end from him and Red Wings Kunjat Bhai lose their 4th wicket. 51 for 4। एक बार फिर से अंपायर ने इशारा किया कि एक और फील्डर को 20 गज के दायरे के अंदर तैनात किया जाएगा स्लो ओवर रेट की वजह से और 3 मात्र खिलाड़ी अब 20 गज के दायरे के बाहर तैनात। अंतिम गेंद बाकी उनकी पारी में। लास्ट बॉल रिमाइनिंग इन देयर इनिंग्स। रऊफ वैशाख नए बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयार और इस बीच अगली गेंद, ये गेंद इस बार उछाला है लॉन्ग ऑफ फील्डर जी नहीं, गेंद तक नहीं पहुंच पाएंगे। आफ्टर 1 ball collected by him, in fact before that the batsmen have got a plenty of time to come back for the second run. So the innings is up and Red Wings Kunjat Bhai managed to score 53 runs on the board for losing 4 wicket in the stipulated 8 overs and now they set a victory target of 54 for Zaman Boys ka ladka to qualify for the grand finale of this competition. And as far as the required run rate is concerned, exactly 6.75 runs per hour they have to score for victory. And 54 they have to score for victory in the stipulated 48 deloves with the help of 10 wicket they have to score for victory to qualify for the grand finale of this competition. अब यहाँ पर सम्मान कार्यक्रम होगा जो कि सम्मानित 7 भूतपूर्व खिलाड़ी जो कि अपने ज़माने के नामचीन खिलाड़ी जो कि काफ़ी बेहतरीन खिलाड़ी जाने जाते थे अपने ज़माने के, उन्हें इस वक्त यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। श्रीमान सुधाकर जो कि फॉर्मर क्रिकेटर हैं, रिटायर्ड एम्प्लॉय ऑफ सिंडिकेट बैंक और
श्रीमान मोहन सुवर्णा अपने ज़माने के एक बेहतरीन गेंदबाज के रूप में जाने जाते थे, जो कि जुगल और यंग फ्रेंड्स की ओर से खेल चुके हैं। और श्रीमान इकबाल गोरी, इनका नाम शायद ही कोई नहीं जानता हो, और काफ़ी बेहतरीन बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं, जो कि A1 स्टार और गोरी यंग बॉयज़ का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। मिस्टर संतोष मंगला देवी जूनियर कैलिस के नाम से जाने जाते हैं, और मंगला देवी क्रिकेटर्स का वो प्रतिनिधित्व कई साल उन्होंने किया। एक बेहतरीन ऑलराउंडर के रूप में जाने जाते थे। और श्रीमान जया UFC, जो कि एक बेहतरीन विकेट कीपर और बल्लेबाज के रूप में जाने जाते थे UFC की ओर से। और श्रीमान कुरेश रिलायंस, जो कि आज भी अपने शरीर के संतुलन को बरकरार रख चुके हैं, फिजिकली फिटनेस आज भी परफेक्ट फिजिकल फिटनेस वो बरकरार रख चुके हैं और आज भी क्रिकेट में सक्रिय हैं, जो कि रिलायंस क्रिकेटर्स के एक बेहतरीन सीनियर क्रिकेटरों में से एक जाने जाते हैं। और श्रीमान प्रवीण मंगला देवी, जो कि एक बेहतरीन खिलाड़ी के रूप में जाने जाते थे अपने ज़माने के। तो इन सब महनीयों को इस वक्त सम्मान न किया जाएगा। मैदान के दाईं ओर जो स्टेज है, और वो सम्मान कार्यक्रम यहाँ पर होगा कुछ लम्हों बाद। तब तक एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे सम्मान कार्यक्रम में, अभिनंदन कार्यक्रम में, जो इस वक्त होने वाला है एक छोटे से लम्हे के बाद मैदान के दाईं ओर भव्य स्टेज पर। तो अब वक्त है एक ब्रेक का। धन्यवाद, थैंक यू।
ಬರ್ತಿದೆ. ಹೇಗೊಂದು ಸ್ಟಾರ್ ನಮ್ಮ ಕುದ್ರೋಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ಬೌಲರ್ ಕೂಡ. ಅಲ್ಲಿ ಗೋರಿಯಲ್ಲಿ ವಹಿಸುವಂತಹ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರರು ಪ್ರವೀಣ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಬಂದ ಮಾತನಾಡಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾದಂತ ಬೌಲರ್ ಗೋರಿಯಲ್ಲಿ ವಾಯ್ಸ್, ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಗೋರಿಯಲ್ಲಿ ವಹಿಸುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದಯಮಾಡಿ ಮಧುಗಿವರು ಗುರಿಯವರು ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಗುರಿಯವರಿಗೆ ಚಪ್ಪಲೆ ಬರಲಿ. ಅಂಡರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಂಡಂತ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಲ್ರೌಂಡರ್. ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ 90ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ರೌಂಡ್ ನೀವು ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮಂಗಳದೇವಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ಸಂತೋಷ್ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಲ್ರೌಂಡರ್, ಅದು ಕೂಡ ಈ ಊರ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಂಗಳದೇವಿ ಪರವಾಗಿ ಅದೆಷ್ಟು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಆಟವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದಂತ ಮಂಗಳದೇವಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ಸಂತೋಷ್ ಇವರನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೋಲಿಸುವುದಾದ್ರೆ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡದ ಜಾಕ್ ಗ್ಯಾಲಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಡರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನ ಜಾಕ್ ಗ್ಯಾಲಿಸ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್. ನಿಜವಾಗಿ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಕಳೆದ 2-3 ವರ್ಷದಿಂದ ಅವರು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅವರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಉಳಿದಿದೆ. So big hand for Santosh of Mangaladeva Cricket is one of the best all-rounder ever produced by Under Cricket. ಇನ್ನೋರ್ವ ಲೆಜೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಯರ್, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚಿರಪರಿಚಿತ ಮುಖ, ಆದರೆ ಈಗಿನ ಕ್ರಿಕೆಟರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಜಯ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದೊಂದು ವಿಕೆಟ್ನ ಹಿಂದೆ ಕಡೆ ಇರುವಂತಹ ಗೋಡೆ. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಆಫ್ UFC ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್, ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಜಯ ಇವರು ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದೆಷ್ಟೋ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ
ಕೇವಲ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದದೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟರ್ ಬೌಲರ್ಸ್. ಆ ಕಟ್ಟರ್ ಬೌಲರಿಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಅದು ಚೇತನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬುಲ್ಲಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲತೀಶ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗಂಗಾಧರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೆಷ್ಟೋ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೌಲರ್ಗಳ ಬಾಲ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಜಯ UFC is deserve to be honored, to be felicitated in this prestigious cricket tournament. Big hand for Jaya UFC. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟ ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಅವರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಿಚ್ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚಪ್ಪಲೆ ಬರಲಿ ಜಯ UFC ಅವರು. ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಆಟಗಾರ, ಅವರೆಲ್ಲೋ ಕುಡ್ದು ಇಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಗತಕಾಲದ ವೈಭವ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವರನ್ನು ಫಾರ್ಮರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಪಾಪರ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಬಂದಲೆ ಎಲ್ಲ ಔಟ್ ನೋಟ್ ಔಟ್ ಜನ ಚಿಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಒಂದು ಬಂದ ಚಿಲ್ಲಿ ಇದು ವಿಕೆಟ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲದ್ರೆ ದೇವರನ್ನು ಮ್ಯಾಚ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅಪ್ಪ ನೋಟ್ ಔಟ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಇಂಚಿ ಹೋಯ್ ನಾವು ಬ್ಯಾಟ್ ಆಡ್ತಾ ಹೋಯ್ ನಾವು ಓವರ್ ಮೇಲೆ ಆಡಬೇಕು. ಚಪ್ಪಲೆ ಬರಲಿ. ತಮಿಳ್ ಮೂವಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಮಿಳ್ ಮೂವಿ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಐಕ್ಯನೆ. ನೌಶಾದ್ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್, ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ನವೀನ್ ಆಫ್ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್, ದಯಮಾಡಿ ಅವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ನಾವು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕುರೇಶ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಯಶಸ್ವಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಕುರೇಶ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್, ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್, ಒಂದು ಏನಾದರೂ ನಾವು ನನ್ನ ತಂಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಬೇಕು, ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಲೆವೆಲನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವುದು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದನ್ನು 100% ಕೊಡುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಸೊ ಕುರೇಶ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಸ್ ಡಿಸರ್ವ್ ಟು ಬಿ ಹಾನರ್ಡ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ prestigious Sauhardha Trophy 2023. The big hand for Kuresh of Reliance Cricketers. ಕಡೆಯದಾಗಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಆಟಗಾರ, ಯಾಕಂದ್ರೆ 90ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಮಂಗಳದೇವಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಇದರ ಪರವಾಗಿ ಆಡಿದಂತ ಒಬ್ಬ ಶಿಸ್ತಿನ ಆಟಗಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದು ಪ್ರವೀಣ್ ಆಫ್ ಮಂಗಳದೇವಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜೀವನವನ್ನು ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರುವ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಆಡಿದರೂ ಕೂಡ ನಂತರ ಮಂಗಳದೇವಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ಗೆ ಹೋದ ನಂತರ ಅದೆಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ತಮ್ಮ ಆಟದ ಮೂಲಕ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಆಟಗಾರ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ಪ್ರವೀಣ್ ಮಾತ್ರ. ವೆರಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್, ತುಂಬ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದ ಆಟಗಾರ. ಸೊ ಇವರಿಗೆ ಚಪ್ಪಲೆ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ವೇದಿಕೆ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲ 6 ಲೆಜೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್, ದಂತಕತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ದಂತಕತೆ. ಇದೀಗ 6 ಆಟಗಾರರಿದ್ದಾರೆ, 200 ಆಟಗಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೀಗ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದ ನಂತರ ಅವರ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ಆರು ಆಟಗಾರರ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. 7ನೇ ಆಟಗಾರ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈಗ ಸನ್ಮಾನ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ನಡುವಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವರು ಸುಧಾಕರ್, ದ ಫಾರ್ಮರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಆಫ್ ನೇತಾಜಿ. ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಹಿಸ್ ಕರಿಯರ್ ಫಾರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್. ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮೊದಲ ತಂಡ, ಈಗಿನ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಮೊದಲು ಯಾವಾಗ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಆರಂಭವಾಯಿತು 80ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ, ಆಗ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಆಟ ಆಡಿದಂಥ ಸುಧಾಕರ್ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಅವರು ನೇತಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಆಡಿದರು. ತದನಂತರ
ಬೊಕ್ಕಪಟ್ನ 11 ಈ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಆಡಿದರು. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಆಗ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಆಟ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು UFC ಟ್ರೋಫಿ. ಆಗ ಫುಲ್ ವೈಟ್ಸ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ವೈಟ್ಸ್, ವೆರಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್, ವೈಟ್ ಕ್ಯಾಪ್. ಅವರ ತಮ್ಮ ಕೂಡ ಹಾಗೆ, ಅವರ ತಮ್ಮ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟಗಾರ ವಿಜಯ್ ಅಂತ. ಸೊ ಟೂ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್, ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಸೌಂಡ್. ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಬರೋದಂದರೆ ಓವರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಡ ಅವರು ಆಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅವರು ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪರವಾಗಿ ಹಲವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ 10 ರಿಂದ 15 ಶತಕವನ್ನು ಕೂಡ ಬಾರಿಸಿದಂಥ ನಮ್ಮ ಸುಧಾಕರ್ ಓವರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈಸ್ ದ ಒನ್ ಹೂಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೋತ್ ಇನ್ ಅಂಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓವರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಈ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸೌಹಾರ್ದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲು ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ಇವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಂತಹ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡದ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು serial most player in this 7 legends, one of the absolutely the legend player, no doubt at all, Sudhakar, the former cricketer and retired employee of Syndicate Bank. ದಯಮಾಡಿ ಇವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. ಚಪ್ಪಲೆ ಬರಲಿ ಸುಧಾಕರ್ ಇವರಿಗೆ. ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಲಾತ್ಮಕ ಆಟಗಾರ. ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ರು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. So one of the best player, technical sound player, Sudhakar will going to receive the felicitation from the chief guest of this felicitation ceremony. Next we are going to Mohan Suvarna. Mohan Suvarna ಇವರು ಈ ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಾದಂತಹ ಅಬೂಬಕರ್, ಆಶಿಕ್, ಅಜ್ಮಲ್ ಇವರು ಈ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಬೇಕು. ನೌಷಾದ್ ಫಲಪುಷ್ಪ ಹಾಗೂ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಮೋಹನ್ ಸುವರ್ಣ ಇವರಿಗೆ ಗೌರವದ ಸನ್ಮಾನ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೋರ್ವ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರು ಇಕ್ಬಾಲ್ ಆಫ್ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್. ಚಪ್ಪಲೆ ಬರಲಿ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಇವರಿಗೆ. ಅವರ ತಂಡದವರೇ ಆದಂತಹ ಪ್ರವೀಣ್ ಇವರು ಮಾಲೆ ಹಾಕಿ ಫಲಪುಷ್ಪ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸಾಲನ್ನು ಹೊದಿಸಿ ನವೀನ್ ಇವರು ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ಇಕ್ಬಾಲ್ ಇವರಿಗೆ ಶಾಲು ಹೊದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಉಮೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಇವರು ಫಲಪುಷ್ಪ ಮತ್ತು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಗೋರಿ ಇಕ್ಬಾಲ್, ದ ಬಿಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಗೋರಿ ಇಕ್ಬಾಲ್. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಇನ್ನೋರ್ವ ಸನ್ಮಾನಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಜಯ ಆಫ್ UFC, ಜಯ ಇವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಅಬೂಬಕರ್ ಹಾಗೂ ಅಜ್ಮಲ್, ನವೀನ್ ಇವರು ಫಲಪುಷ್ಪ ಮತ್ತು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಬಿಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಜಯ ಆಫ್ UFC ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್. ನೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಂತೋಷ್ ಆಫ್ ಮಂಗಳದೇವಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಸಂತೋಷ್ ಈ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಪ್ರವೀಣ್ ಇವರು ಹಾರವನ್ನು ತೊಡಿಸಿ ಶಾಲನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ದಿನೇಶ್ ಆಫ್ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್, ದಿನೇಶ್ ಬಜಿಲ್ಕೇರಿ ಅವರ ವೇದಿಕೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ದಯಮಾಡಿ ದಿನೇಶ್ ಅವರ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ಚಪ್ಪಲೆ ಬರಲಿ ದಿನೇಶ್ ಇವರಿಗೆ. ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಂಥ ದಿನೇಶ್ ಇದೀಗ ಪ್ರವೀಣ್ ಇವರಿಗೆ ಚಪ್ಪಳೆ ಬರಲಿ. ಪ್ರವೀಣ್ ಆಫ್ ಮಂಗಳದೇವಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್, ದಿನೇಶ್ ಬಜಲಕೇರಿ ಹಾರವನ್ನು ತೊಡಿಸಿ ಹಾಗೆ ಶಾಲನ್ನು ಹಾಕಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಅಶೋಕ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಅವರ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಶೋಕ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರವೀಣ್ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟಗಾರರು ಅಶೋಕ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರವೀಣ್. ಇದೀಗ
ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಜಪ್ಪು ತಂಡದ ಕುರೇಶ್ ಇವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟಗಾರ ಅಶೋಕ್, ಹಾಗೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್, ಶಾಲನ್ನು ಹೊದಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಕರ್ಣ ಇವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಫಲವಸ್ತು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ದಂತಕತೆ ಲೆಜೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೀರಿ, ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಜೀವನ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲವಾಗಿರಲಿ. ಇನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ತಮಗೆ ಐರಾರು ಭಾಗ್ಯ, ಐಶ್ವರ್ಯ, ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಆ ದೇವರು ಕರುಣಿಸಲಿ. ನರೇಶ್ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನರೇಶ್, ಉದಯ್, ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್, ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ಸ್. ಎಲ್ಲರೂ ಬರಬೇಕು. ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ಮಧು ಒಬ್ಬರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬರಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಮಧು ಬೇಕು ನಮಗೆ. So congratulations for all legend players, those who are ruled under arm cricket in the 80s and 90s, 2000 and present cricket also. So congratulations, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರಿಗೆ. ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಮಯವನ್ನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕಳೆದಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ, ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಂತರ ನಾವು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಎರಡನೆಯ ಸೆಷನ್, ಅಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ 7 ತಂಡಗಳು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡ ತಮ್ಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈಗಲೇ ಇನ್ನು ಜಮಾನ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ತಂಡದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಟು ಗೋಪಿ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Dhanyawad Satish. So straight away we coming back to the second session of the second semi-final match between Red Wings Kunjat Pail versus Zaman Boys Kalarka, and 54 the target for Zaman Boys Kalarka in 8 overs sent by Red Wings Kunjat Pail. Batted for the man scored 53 runs. They separated 8 overs, exactly 6.75 the required run rate for them. With the help of 10 wickets, Zaman Boys Kalarka have to score the present equation shows for them, and let's see can they reach the target or not. I request all the spectators, please clear the ground. The match is now starts immediately. ಅದೇ ರೀತಿ ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ ಪೇಲ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕೂಡಲೇ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಳಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಜಮನ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ಕೂಡಲೇ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ಸೀಮಾರೇಖೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ, ಮೈದಾನವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು.
धन्यवाद सतीश. So the target is 54 now in 8 overs. ಅಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸೀಮಾರೇಖೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ದಯವಿಟ್ಟು ಸೀಮಾರೇಖೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. So Azim and Rashid Baba, the openers, and Yajnesh the bowler. 54 the target for Zaman Boys Kalladka to start their innings, and their innings now going to start, and exactly 6.75 runs per hour they have to score for victory. So first ball of their innings is now coming up. और पहली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार. यज्ञेश इस बार पहली गेंद को ड्राइव कर दिया. गेंद पहुंची मिड विकेट पर, रन के लिए दौड़ पड़े. निशाना यहां पर लग चुका है और पहली गेंद पर यह विकेट यहां पर गिर चुका है. आजिम की पारी समाप्त. जोखिम भरा रन चुराना चाहा. डायरेक्ट निशाना इस वक्त लगता है वसीली मिड ऑन फील्डर का. हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले. देखिए किस तरह से गेंद पर झपके निशाना दागा और उनका निशाना बिल्कुल सही बैठता. वह पहली गेंद पर आजिम का विकेट गिर चुका है और पहला विकेट यहां पर खो चुका है जमन बॉयज का लड़का उनके पारी की पहली गेंद पर. Absolutely, that was an absolutely brisky run at the last moment. और जोखिम भरा रन न चुराने के प्रयत्न में अपना विकेट खोने के बाद पेविलियन वापस लौटते हुए और शून्य पर पहला विकेट यहां पर गिर चुका है. इट्स नॉट फॉर वन इन द फर्स्ट ओवर. और अब आजिम का विकेट गिर जाने के बाद इंतजार है नए बल्लेबाज का. तो देखते हैं कौन से बल्लेबाज इस वक्त मैदान पर उतरते हैं. तो इस वक्त नंबर 3 बल्लेबाज मैदान पर उतरते हुए और यहां पर रशीद बाबा स्ट्राइक पर आ चुके हैं. और इस वक्त देखना यह है कि यज्ञेश किस तरह की गेंदबाजी इस वक्त रशीद बाबा के लिए करते हैं. रशीद बाबा खासकर पावर प्ले का फायदा उठाने में माहिर है और इस बीच सामना करने के लिए तैयार. बाएं हाथ राउंड द विकेट. ये गेंद इस बार लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई वाइड का इशारा और वाइड के इस रन के साथ स्कोर रनों का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है. एक रन एक विकेट के नुकसान पर द्वितीय सेमीफाइनल मैच, दूसरा सेमीफाइनल मैच इस प्रेस्टीजियस क्रिकेट टूर्नामेंट सौहार्दा ट्रॉफी 2023 के अंतर्गत यहां पर शुरू हो चुका है. इस बार दूसरी पारी यहां पर शुरू हो चुकी है. गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई एक और वाइड का इशारा और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 2 रनों पर. और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो गेंदबाज बाएं हाथ के एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद बेहतर गेंद ड्राइव किया खूबसूरती के साथ इनटू द गैप एज वेल. ही गेट्स एटलीस्ट कपल फॉर दैट. इनसाइड आउट क्रिकेट इस वक्त खेला था रशीद बाबा ने. जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता कवर पॉइंट पर पीछे की ओर दौड़ते हुए बल्लेबाज के पास मौका 2 रन प्राप्त करने का और इन 2 रनों के साथ रनों का सिलसिला यहाँ पर बढ़कर पहुंच चुका है 4 रनों पर बिना किसी नुकसान के. जहां तक जमन बॉयज कल्लड़ का के विजय का सवाल है, इस वक्त रशीद बाबा की उपस्थिति उनके लिए बेहद जरूरी है. और रशीद बाबा एक विस्फोटक पारी खेलते हैं जमन बॉयज के लिए, तो निस्संदेह जमन बॉयज लक्ष्य तक पहुंच सकता है. यह गेंद इस बार रशीद बाबा के लिए गेंद को ड्राइव कर दिया. गेंद पहुंची इस वक्त मिड ऑफ पर जहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गया. 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है. और जहां तक सवाल है इस वक्त रेड विंग्स कुंजत बेल का, तो इस वक्त उन्हें रशीद बाबा का विकेट उखाड़ना होगा जल्द से जल्द अगर उन्हें इस मैच में अपनी पकड़ मजबूत करनी है. तो 5 रन बन चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर. और यज्ञेश गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज जो कि 0-6 नंबर की जर्सी पहने हुए इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. साज नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. और यज्ञेश बाएं हाथ राउंड द विकेट. ये गेंद साज के लिए रिवर्स शॉट खेलना चाहा, लेग स्टंप पर कुछ हद तक आते हुए और अंतिम क्षण में इस अपील को नकार दिया अंपायर ने. लेग बाय का इशारा. 1 रन का इजाफा और 1 रन के इजाफे के साथ कुल स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 6 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर. 6 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस. और इस बीच यज्ञेश अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार रशीद बाबा के लिए. और बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बॉल आउट. एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन. This is an outstanding perfect leg cutter delivery and he just got the rid of Rashid Baba and this is a big wicket for Red Wings Kunjat Bail. Rashid Baba आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए परफेक्ट
लेग कटर गेंद थी और इस गेंद पर पूरी तरह बीट हो गया. हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले. दिस इज एन एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग डिलीवरी. और राशिद बाबा खुद अपने आप से नाखुश, अपने बल्ले को हवा में उड़ाकर उछाल कर उन्होंने अपनी नाखुशी का इजहार किया और आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए दूसरा विकेट यहां पर गिर चुका. सेकंड विकेट डाउन. 6 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट. छह रन 2 विकेट के नुकसान पर. 6 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट. राशिद बाबा 6 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स. और यहां पर पहला ओवर प्रगति पर. अब रशीद बाबा का विकेट गिर जाने के बाद कुछ हद तक राहत भरी सांस यहां पर रेड विंग्स के कप्तान लेते हुए, लेकिन अभी भी मौका जरूर है जमन बॉयज को कमबैक करने का. तो यहां पर गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए गेंदबाज यज्ञेश बाएं हाथ राउंड द विकेट. ये गेंद अच्छी गेंद थी, गेंद को ड्राइव करते इस वक्त शॉट कवर की दिशा में रन के लिए दौड़ पड़े. 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा जो कि बड़ा रन यहां पर चुराते हुए और 1 रन के साथ कुल स्कोर बढ़कर पहुंच चुका. 7 रन 2 विकेट के नुकसान पर. 7 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ओवर. मिक्स स्टार्ट फॉर जमन बॉयज का लड़का. 47 more runs now they have to score for victory in remaining 7 overs. That means in remaining 42 deliveries with a required run rate of just under 7 runs per over at this situation. Still they got 8 wickets kept intact. और इस बीच दूसरा ओवर यहां पर प्रारंभ होता हुआ. ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಟೋರ್ಪಿಡೋಸ್ ಕಾಣದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಈ ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಟೋರ್ಪಿಡೋಸ್ ಕಾನ ಹಾಗೂ ಈ ಪಂದ್ಯದ ವಿಜೇತ ತಂಡದ ನಡುವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡೂ ತಂಡದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಟೋರ್ಪಿಡೋಸ್ ಕಾನದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಈ ಪಂದ್ಯದ ವಿಜೇತ ತಂಡ ಹಾಗೂ ಟೋರ್ಪಿಡೋಸ್ ಕಾನ ತಂಡದ ನಡುವೆ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದ ತರುವಾಯ दाहिने हाथों पर द विकेट. ये गेंद बेहतर गेंद थी. इस वक्त खेलना चाहा, गेंद के लाइन पर नहीं आ पाए और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में. रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला. स्कोर इस वक्त रुक चुका है. 7 रन 2 विकेट के नुकसान पर. बेहतरीन गेंदबाजी का सिलसिला इस वक्त जारी रखते हुए इस वक्त सुस्तान गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट. ये गेंद इस बार बेहतर. एब्सोल्युटली ब्रिलियंट एंड नाउ इट्स गोइंग टू बी अ थर्ड अंपायर. तो यहां पर विकेट उखाड़े गए थे और देखना यह है कि जब विकेट उखाड़े गए थे तब बल्लेबाज का बैकफुट लिफ्ट हुआ था क्रीज से या नहीं, लेकिन ऐसा कहना पड़ेगा ब्रिलियंट वर्क मेड बाय विकेट कीपर बिहाइंड द स्टंप्स. और यहां पर देखना यह है कि तृतीय अंपायर क्या निर्धार यहां पर देते हैं. एब्सोल्युटली मैग्निफिसेंट वर्क मेड बाय विकेट कीपर बिहाइंड द स्टंप्स एट द लास्ट मोमेंट. लगभग जमीन के सहारे गेंद आई थी सुस्तान की और विकेटों के पीछे तेजी के साथ विकेट कीपर ने उखाड़े. और यहां पर देखते हैं तृतीय अंपायर क्या निर्धार देते हैं. He's gone. He's got just shot out of his crease when stumps are uprooted by wicket keeper. और बेहतरीन स्टंपिंग. Absolutely brilliant work behind the stumps made by wicket keeper. And that is the end of मुस्ताफा. किशोर विकेट कीपर थे और मुस्ताफा का विकेट गिर चुका है. और मुस्ताफा का बेशकीमती विकेट गिरने के बाद जो दबाव था जमन बॉयज लड़के के ऊपर, वो दबाव अब और भी यहां पर बढ़ चुका है. देखिए किस तरीके से यहां पर विकेट उखाड़े थे विकेट कीपर किशोर ने. एब्सोल्युटली फैंटास्टिक बिहाइंड द स्टंप. जैसे ही बैकफुट क्रीज से बाहर गई विकेट कीपर ने तेजी के साथ विकेट यहां पर चटकाए और इससे पहले कि अपना बैकफुट बल्लेबाज क्रीज के अंदर रखी थे. 3 wickets down, 7 runs on the board, and this is a really testing time progressing here for the batsmen of Zaman Boys का लड़का. नए बल्लेबाज, new batsman is now slowly coming out to the middle with lots of responsibility.
And a fantastic piece of bowling performance continuing from the bowlers of Red Wings कुंजत बेल्लाव। और बाएं हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। सुस्तान अपनी ओर की अगली गेंद, दूसरा पावर प्ले उभर रहा उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर रहा। और जहाँ तक सवाल है, ये गेंद स्वीप करना चाहा, सिली पॉइंट मिड ऑन पर रन के लिए दौड़ पड़े, एक रन यहाँ पर मिलेगा। अल्ली मैदान दल ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರೋದು। ಹಲೋ ಹಲೋ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಕೆಳಗಿಡಿ। तो एक रन इस वक्त मिलेगा और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 8 रनों पर। इट्स 8 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर सेकंड इन प्रोग्रेस। और गेंदबाज सुस्तान इस वक्त गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार शाज। और ये गेंद इस बार ऑन साइड पर मोड़ना चाहा, अपील इस वक्त पार पर कोई प्रभाव नहीं, एक रन मिलेगा। और जहां तक सवाल है, एक रन बल्लेबाज पूर्ण कर चुके हैं, कोई इशारा नहीं अंपायर द्वारा। इस गॉट अ बैट ऑन दैट एट द लास्ट मोमेंट। और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है इस वक्त 9 रनों पर। निस्संदेह यहाँ पर एक लंबी सांसदारी की सख्त जरूरत जमन बॉयज सकल लड़का को कम बैक करने के लिए। फिलहाल इस वक्त रेड विंग्स कुंजत बेल के गेंदबाज हावी बल्लेबाजों के ऊपर। और सुस्तान अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए तैयार। Here he bowls. Just wanted to sweep that one, missing the line. This could be trouble. Oh, बाएं हाथ के किशोर का थ्रो इस वक्त स्टंप्स को नहीं टकराया और इस बीच बल्लेबाज बाल बाल बच चुके हैं। जोखिम भरा रन था, अगर निशाना स्टंप्सों पर टकरा था, किशोर का थ्रो अगर स्टंप्सों पर टकरा था तो निस्संदेह यहाँ पर बल्लेबाज की पारी समाप्त हो सकती थी। देखिए किस तरीके से यहाँ पर हुआ था और बल्लेबाज यहाँ पर बाल बाल बच चुके हैं। एक रन 2 अंकों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है, 10 रन 3 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर। और इस बीच बातचीत करने के बाद दोनों बल्लेबाज अपने स्वस्थान पर लौटते हुए और अपनी ओर की अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार। और स्वस्थान गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट। ये गेंद रिवर्स शॉट, गेंद को खेलना चाहा 2 कदम आगे जरूर बढ़ा लेकिन एन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींच लिए। और इसी के साथ दूसरे ओवर की समाप्ति यहाँ पर हो चुकी है। 2 overs completed and after 2 overs still the batsmen of Zaman Boys का लड़का searching for the right track, 10 for the loss of 3 wicket. 44 more runs now they have to score for victory in remaining 6 overs. That means in 36 deliveries with a required run rate of exactly 7.33 runs per over. Still they got 7 wickets kept intact. और जहाँ तक सवाल है मैच का तख्ता कुछ हद तक इस वक्त रेड विंग्स का भारी जरूर लग रहा है लेकिन कम बैक करने का मौका जरूर है इस वक्त जमन बॉयज का लड़का के बल्लेबाजों को। एक बेहतर साझेदारी यहाँ पर उन्हें इस मैच में वापस ला सकती है। और इस बीच गेंदबाज यहाँ पर शुरू करते हुए यज्ञेश, जिन्होंने अपना ओवर काफ़ी बेहतर फेंका था और अपने दूसरे ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार गेंदबाजी करने के लिए बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट यहां पर चलती हुई। बाएं हाथ के बल्लेबाज इम्तियाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। 2 ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध हट चुके हैं, पावर प्ले समाप्त हो चुका है और फील्डर इस वक्त मैदान पर छाते हुए अभी भी फील्डिंग में जमावट करते हुए गेंदबाज यज्ञेश, एक फील्डर को इस वक्त कवर पॉइंट क्षेत्र के अंदर बुला लिया गया है और मिड ऑफ फील्डर को इस वक्त पीछे भेज दिया गया है लॉन्ग ऑफ पर, जबकि डीप एक्स्ट्रा कवर इस वक्त मौजूद। और इस बीच ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज यज्ञेश तैयार। बाएं हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद रिवर्स शॉट, गेंद को खेलना चाहा, गेंद पहुंची शॉट स्क्वायर लेग की दिशा में, रन के लिए दौड़ पड़े, 1 रन मिलेगा। थ्रो काफी वाइड और इस बीच बाइक का इशारा अंपायर का और बाइक इस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 11 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। इट्स 11 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द थर्ड ओवर। और हर गेंद के साथ इस वक्त फील्डिंग में जमावट करते हुए गेंदबाज लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन जो कि क्रीज पर इस वक्त मौजूद है। और जहाँ तक सवाल है स्ट्राइकर एंड का तो इस वक्त सामना करते हुए शाज और ये गेंद
स्वीप किया, पैडल स्वीप, स्टंप्स को कवर करने के बाद घुटनों के बल बैठते हुए डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में, और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता, 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है. इट्स 12 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 3 in progress. Absolutely festival atmosphere we are just watching in this ground, and a fantastic tournament is now progressing in the name of Sauhardha Trophy 2023. और यज्ञेश अगली गेंद, ये गेंद परिवर्तन के तौर पर धीमी गेंद, गेंद को इस वक्त मोड़ना चाहा, गेंद पहुंची इस वक्त शॉर्ट टर्न बैन पर, नॉट मोर देन अ सिंगल, बाई का इशारा, बाई के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 13 रनों पर. रन्स ज्यादातर सिंगल्स के रूप में इस वक्त बनते हुए, और ऐसा कहना पड़ेगा इस वक्त एक बेहतर गेंदबाजी का सिलसिला जारी रखते हुए गेंदबाज रेड विंग्स कुंजत पहल के. यज्ञेश इस वक्त तैयार, ये गेंद स्वीप करना चाहा अपने अंतिम क्षण में अपने बल्ले को क्रीज पर रख दिया उन्होंने, गेंद को बिना देखे इस वक्त रन लेना चाहता, स्वीप रिवर्स शॉट खेलना चाहता, और सोचे कि रिवर्स शॉट खेलने के बाद, रिवर्स शॉट का प्रयत्न करने के बाद सोचे कि गेंद जा चुकी है शॉर्ट टर्न बैन पर, लेकिन जैसे ही उन्होंने भापा कि गेंद विकेट कीपर के अति निकट पहुंच चुकी है, अपने बल्ले को वापस क्रीज पर रख दिया, और इस वजह से सब कुछ सुरक्षित. यह गेंद ऑन साइड पर स्विंग करना चाहा, गेंद पहुंची शॉर्ट फाइन लेग पर, 1 रन मिलेगा इस बीच, और सिर्फ बाई का इशारा अंपायर का. जोखिम भरा रन यशस्वीतम यहाँ पर पूर्ण करते हुए 14 रन बन चुके हैं. तीसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर, और यज्ञेश एक बार फिर से फील्डिंग में जमावट यहाँ पर करते हुए तैयार, बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए, दाहिने हाथ के बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए इस बार स्वीप करना चाहा, क्विक पेस ऑफ वर्क, लेकिन यहाँ पर बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद. तो बेहतर गेंद और डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति कर चुके हैं. एक और बेहतर ओवर, वन मोर गुड ओवर इन रेड विंग्स पॉइंट ऑफ व्यू केम टू एन एंड, एंड अ फैंटास्टिक स्पेल केम टू एन एंड from Yajnesh. 3 overs gone, 14 for the loss of 3 wickets. Still the batsmen of Zaman Boys ka ladka are now searching for the right track. And let's straight away coming back to the equation. 54 minus 14, that means exactly 40 runs required in remaining 5 overs, and the required run rate is now gone up to exactly 8 runs per over. 30 balls left, 40 runs needed. Still they got 7 wickets kept intact, 7 wickets caught in their hand. और यहाँ पर कुछ संदेशा उनके लिए भेजा गया है प्लेयर्स डगआउट से. खिलाड़ी इस वक्त पानी की बोतल लेकर आकर उनको देते हुए, और पानी का ग्रहण करने के बाद कुछ हद तक सूचना देने के बाद इस वक्त वापस लौटते हुए, इस वक्त निश्चित रूप से यहाँ पर प्लेयर्स डगआउट से उनके लिए कुछ इस वक्त संदेशा सूचना जरूर आई है कि किस तरीके की बल्लेबाजी इस वक्त अपनानी चाहिए. और इस बीच चौथा ओवर शुरू होता हुआ हमसे दूर वाले छोर से, यानी सुरेश बी एंड की ओर से, और तस्लीम इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए, और तस्लीम का जहां तक सवाल, एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी, बेहतर गेंदबाज और बेहतर बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं, और यहाँ पर वो सामना करने वो इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार, जबकि दाहिने हाथ के बल्लेबाज शाज इस वक्त सामना करते हुए. दर्शक खामोशी के साथ मैच का आनंद यहाँ पर लेते हुए, और लगभग रात के 9:15 बज चुके हैं, और द्वितीयार्ध इस द्वितीय सेमीफाइनल मैच का यहाँ पर प्रगति पर. पहले गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर, रन के लिए दौड़ पड़े, 1 रन प्राप्त कर चुके हैं. स्पेक्ट्रा वाइड स्टार्ट्स ऑफ विद अ वाइड एंड अ कपल ऑफ रन्स एडेड टू द टोटल. इट्स 15 नाउ, 38 नीडेड इन रिमेनिंग 30 बॉल्स. और एक बेहतर ओवर इस वक्त जमन बॉयज का लड़का को चाहिए इस मैच में अपनी वापसी करने के लिए, जिसमें कम से कम 12 से 15 रन अगर बनते हैं तो निस्संदेह जमन बॉयज का लड़का इस मैच में वापस आ सकता है. और तस्लीम इस बीच अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. फील्डिंग में एक बार फिर से जमावट करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज इम्तियाज इस वक्त सामना करते हुए, और ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट. ये गेंद एक बार फिर से लेग स्टंप से बाहर, ओह 9 रन पर खतरा, और इस बार रनों का खतरा हो सकता है, निशाना टकरा चुका है, और यहां पर यह विकेट गिर चुका है. मिसअंडरस्टैंडिंग की बदौलत यह विकेट यहां पर गिरा था. गेंद तेजी के साथ शॉर्ट थर्ड मैन पर पहुंची थी, देखिए किस तरीके से हुआ था. हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले. गेंद शॉर्ट फाइन लेग को फील्डर के हाथों में पहुंची, गेंद विकेट कीपर के हाथों में, और विकेट कीपर ने गेंद को शाइन किया नॉन स्ट्राइक रेट पर, और बल्लेबाज क्रीज पर वापस नहीं लौट पाए, और इसी के साथ एक और विकेट यहां पर गिर चुका है. विकेटों के ऊपर विकेट गिरते हुए, और हर विकेट के पतन के साथ परेशानियां और बढ़ती हुई
Zaman Boys का लड़का के लिए. The problems are now more building up for them. 17 for the loss of 4 wickets. And this is the 4th over in progress in their innings. So fantastic piece of bowling performance continuing here from the batsmen, from the bowlers of Red Wings Kunjat Bail at this situation, and because of that the batsmen of Zaman Boys ka ladka just struggling for runs. Number 6 batsman is now comes out to the middle. तौफीक और वो इस वक्त नॉन स्ट्राइक रन पर मौजूद. और यहाँ तक सवाल है विकेट का, तो शाज आउट होकर पेविलियन वापस लौट चुके हैं. और इस बीच तस्लीम कोई भी सही गेंद अब तक इस ओवर में उन्होंने नहीं फेंकी है. ओवर की अगली गेंद लेग स्टंप से बाहर, एक बार फिर से सही और सही लेंथ और लाइन को यहाँ पर तराशते हुए वाइड अगेन. 18, 36 needed, 30 balls left. और निस्संदेह 3 लगातार वाइड इस ओवर में तस्लीम फेंक चुके हैं. टीम के अन्य खिलाड़ी इस वक्त उनसे कुछ कहते हुए, भैया इस वक्त आप ऐसे वाइड इस वक्त फेंकेंगे तो निस्संदेह यहाँ पर सामने वाली टीम का पलड़ा भारी हो जाएगा. तो देखते हैं कमबैक करने के लिए तस्लीम किस तरीके की गेंदबाजी अपनाते हैं अगली गेंद पर. और इस भी तैयार, ये गेंद बेहतर, एब्सोल्युटली बेटर. अपील इस वक्त जारी है, लेकिन यहाँ पर तीसरे अंपायर के लिए मांग की गई है. It's going to be a third umpire. तो देखिए यहाँ पर कुछ हद तक लेग स्टंप से बाहर की ओर गेंद नहीं निकल रही थी शायद. गेंद दिस इज ऑटोमेटिकली स्टंप्ड. गेंद विकेट कीपर के हाथों से टकराने के बाद अपने आप स्टंप्स पर टकरा चुकी, बिल से डिस्टर्ब हो चुकी. और देखना है कि जब बिल्स डिस्टर्ब हुए थे तब बल्लेबाज का बैकफुट टक्रीज पर था या नहीं. No doubt is the call and the batsman survived. और हालांकि इनका बैकफुट जरूर उठ चुका था, लेकिन फ्रंट फुट अंतिम क्षण में क्रीज पर था जब बिल्स डिस्टर्ब हुए थे ऑटोमेटिक स्टंप द्वारा. और गेंद लगने के बाद तो यहाँ पर बल्लेबाज बच चुके हैं. और देखना यह है कि अब अपना जो विकेट इस वक्त बच चुका है, उस बचे हुए विकेट की मदद से किस तरीके की बल्लेबाजी यहाँ पर अपनाते हैं बल्लेबाज आने वाले गेंदों में. और तस्लीम दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए. ये गेंद लेग स्टंप पर आते हुए, ओह स्लॉपी, दिस इज एब्सोल्युटली स्लॉपी. 1 + 4, 5 runs. And the tide is now turned. 5 added to the total. And the scoreboard is now moving up to 23 now for the loss of 4 wicket. 31 required. 29 balls left. And the Zaman Boys Kalladka are now back in the game. All because of this over. सिर्फ एक गेंद इस ओवर में फेंक चुके हैं और 9 रन प्रदान कर चुके हैं यहाँ पर तस्लीम. तो 8 रन, ऐसा कहना पड़ेगा 9 रन भी वाइड के रूप में वो प्रदान कर चुके हैं. तो यहां पर 30 गेंदे 31 रन, 30 balls and 31 runs they have to score for victory. इस बार गेंद को खेल दिया. 29 balls left in fact, now 28 balls left and 30 runs needed, 30 needed in remaining
28 डिलीवरीज। तो काफी महंगा ओवर यहां पर साबित होता है। तस्लीम 9 रन तोहफे के रूप में, उपहार के रूप में, वाइड के रूप में वो प्रदान कर चुके हैं जमन बॉयज का लड़का का, और उन 9 रनों की बदौलत वो इस मैच में इस वक्त वापस आ चुका है। अब तलाश है घातक गेंदबाजी की, और तस्लीम इस वक्त गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो ओवर द विकेट, ये गेंद बेहतर गेंद, बॉल्ड आउट। इस बार बॉल्ड आउट है या नहीं देखना पड़ेगा, अंतिम क्षण में ये विकेट गिर चुका है, अंपायर की उंगली यहां पर उठ चुकी है और इसी के साथ ये विकेट गिर चुका है। हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले। देखिए किस तरीके से हुआ था यहां पर, शायद बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ की थी, थोड़ी सी डिविएट होकर अंदर की ओर आई थी। और जहां तक सवाल है यहां पर आउट का, तो देखते हैं किस तरीके से यहां पर हुआ था। बल्लेबाज ने अपना बल्ला इस वक्त उठाने के बाद गए, गेंद को उछालना चाहा, लेकिन गेंद उनके बल्ले को वंचित करती हुई सीधे निकल गई। इस वक्त स्टंप विकेटों पर बोल्ड आउट के रूप में विकेट गिर चुका है। सो 24 for 5। हालांकि इस ओवर में 9 रन बन चुके हैं, लेकिन इस विकेट गिर जाने के बदौलत यहां पर एक बार फिर से दवा जमन बॉयज का लड़का के ऊपर। अब जरूरत है उनके लिए एक सेंसिबल बल्लेबाजी की, और नंबर 7 बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए जमन बॉयज का लड़का की ओर से माजिद। तो जहां तक मैच के विजय का सवाल है, अभी भी ऐसा कहना पड़ेगा इस ओवर की बदौलत जमन बॉयज का लड़का इस मैच में वापस आ चुका है। हालांकि पिछले गेंद पर एक विकेट जरूर गिरा था, लेकिन अभी भी मौका है उनके पास बराबर का। इट्स गोइंग टू बी 50-50 एट दिस सिचुएशन। और तस्लीम एक लंबा ओवर उनका प्रगति पर, माजिद इस वक्त सामना करने के लिए तैयार रहा। दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए माजिद के लिए तस्लीम तैयार। ये गेंद रिवर्स शॉट, गेंद को खेला, पॉइंट पर गेंद पहुंची, 1 रन मिलेगा, और 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज दौड़कर संतुष्ट हो चुके हैं, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 25 रनों पर 5 विकेट के नुकसान में। 25 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट। तो 2 गेंदें इस वक्त बाकी, 2 balls left in this over, 29 runs more now they have to score for victory in remaining 26 deliveries। और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो तस्लीम इस वक्त गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, और ये गेंद इस बार हल्के से गेंद को पैडल स्कूप कर दिया, गेंद जाती हुई बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में, गेंद पर वहां पर जब तक स्क्वायर लेग पर फील्ड हो, बैकवर्ड स्क्वायर लेग फील्डर के बैकवर्ड स्क्वायर लेग पहुंचने से पहले स्क्वायर लेग पर जब तक गेंद को फील्ड की जाए, बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। सेंसिबल क्रिकेट ये दोनों बल्लेबाज अपनाते हुए वो जान चुके हैं इस वक्त बॉल टू बॉल जो कि रन बनाना है और विकेटों की सुरक्षितता पर एवं ध्यान देना है। तो इस वजह से वो इस वक्त विकेटों को बचाकर सेंसिबल क्रिकेट अपनाते हुए, और तस्लीम इस ओवर में अंतिम बार दाहिने हाथों पर द विकेट। यह गेंद इस बार रिवर्स शॉट, गेंद को खेलना चाहा, चूंकि डॉट गेंद के साथ एक लंबे ओवर की समाप्ति। तो 4 ओवर की समाप्ति, 26 रन बच चुके, 26 for 5 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 overs, 28 to get, 24 balls रिमाइनिंग, और 13 रन स्कोर्ड इन दिस ओवर। इस ओवर की बदौलत, हालांकि इस ओवर में 2 विकेट जरूर गिरे, लेकिन 13 रन बने, और इस ओवर की बदौलत जमन बॉयज का लड़का इस मैच में वापस आ चुका है। तो सतीश आइए आप माइक्रोफोन पर आपको बुलाते हैं, और 26 रन था, इक्वल बैटल इज नाउ कंटिन्यूइंग। रन की गति काफी बेहतर 6.5, लेकिन द क्वेश्चन रेजेस अबाउट विकेट, दे लॉस्ट देयर 5 टॉप एंडर्स विकेट्स, लेकिन स्टिल दे हैव गॉट अ चांस। 28 more runs now they have to score for victory in remaining 24 deliveries। और एक सूझबूझ भरी बल्लेबाजी यहां पर जमन बॉयज का लड़का को इस मैच में अपने मंजिल तक पहुंचा सकती है। और जहां तक रेड विंग्स कुजत बेल का सवाल है, इस वक्त उन्हें चाहिए बचे हुए 4 ओवर में एक ऐसी गेंदबाजी जो बल्लेबाज को पूरी तरह खामोश कर दे। तो जहां तक मैच के विजय का सवाल है, अभी भी ऐसा कहना पड़ेगा सतीश, इट्स गोइंग टू बी 50-50 एट दिस सिचुएशन। Well, Gopi, 50-50 at the situation because of that previous over, and absolutely in this condition it's going to be a huge over for Zaman Boys Kaladka. 13 runs which came from that over of Taslim brought Zaman Boys Kaladka back into the game. But just like you're mentioning about if Red Wings wanted to win the match, I think they need to concentrate over the wickets of the Zaman Boys Kaladka, because they lost 5 wickets, and another 2 wickets in a quick session can put some pressure onto the batters of Zaman Boys Kaladka. And wait to see which team will go into handle the pressure here. Half of the job which is completed now,
Now they have to complete another half of the job. That means 27 completed. Now they have to get another 27 runs in 3.5 deliveries. The bowler's back drive, but ball hits the non-strikers. They're appealing. They're appealing for the catch. They're appealing for the catch, but maybe they're appealing for something there. They're saying that they're obstructing the field. They just wanted to asking for the umpire, but umpire Mohanay is saying, "What are you doing? They are not in." They're absolutely they're in the right line as far as the running between the wickets is concerned, and rightly so. So it's 28 for the loss of 5 wickets. It's a 28 for the loss of 5 wickets. The bowler will going to continue from the commentary box, and Sustan bowls. There's a lovely shot. Driven that one down to deep. Long on range. They're coming back for the second. In comes the third. Absolutely disaster. I don't think it's going to be necessary here for both the batter to come back for the second. I don't think it's definitely throwing a wicket in this condition means you are throwing your matches to the opposition. But I think appreciate effort of that fielder. I think Bhagwan is the fielder in the deep, in the long on. Absolutely done a great job. The throw has been exquisite and right over the bills. No, I think there's number 97 there in the deep long on. Did a great job. Absolutely great job. Vaishak is a fielder in the deep. What a great throw. What a great throw. Not only collected that one neatly, but he returns the ball right over the bails in the non-strikers end. And Sustan complete the formalities of making the run out. It's 29 for the loss of 6 wickets. Now, that wicket, definitely Red Wings will go into capitalize. They definitely wanted to capitalize because whenever the new batter is coming to the middle, the condition is not that much of easy for the new batter. But wait and see how well the new batter will go to handle the pressure. But here is Imtiaz. Will going to have the strike here. The left-hand batter. As a new batsman, Mukhtar is the batter in the non-strikers end. Sustan bowls. This time he wanted to get it on very fine. Already they got a one boundary in behind the wicket in the previous over. But this time the fielder is there in the deep so that they have to settle for the single by call by umpire. With the addition of that singles cover numbers under 29 for the loss of 6 wicket. 30 for the loss of 6 wicket. They have to get another 24 runs to win this match. So 20 ball remaining. 24 more runs required for the victory. Mukhtar is a new batter. This time going for the expansive drive. Looks like it's going to be opportunity for the wicketkeeper behind the stump. The Tanzim, a slight bit of excitement is shown. So that the ball which is misses his hand and Mukhtar has got a life. It's 30 for the loss of 6 wicket. Sustan bowls. He wanted to try the extra management and he's going to be get a couple of runs here. This is the one area Red Wings are really need to pay the penalty for that. When things are very difficult for the batter, you need to bowl the wide deliveries. Not only need to bowl that again, but extra 2 runs which is added to total. 32 for the loss of 6 wicket. 64 sixes and 49 boundaries so far scored in this tournament. This time he wanted to make a room to play the shot. This time he's shying the strike to shy at the stump. Misses the stump. If it is a directed, it's going to be a one more wicket here for Red Wings. And dotted delivery to end the over number 5. Chasing 54 to win this match. Still the match is evenly poised. It's going to be anybody's game. And team Zaman Boys colored card 32 for the loss of 6 wickets. 32 for the loss of 6 wickets. And now 22 to get from 18 balls. Fantastic semi-final is in progress. Torpedoes Ghana already they reached to the final of this prestigious Sauhardha Trophy 2023. After they defeating KCCR Kadri by just a 7 runs victory in the first semi-final. Now wait and see which team will going to get the place in the big final. Zaman Boys colored already they are once they came into the final in this USCG cricket ground. Now maybe they're trying for this one more final here, but Red Wings Kunjat Bail there also has got a dream to come to the final. Oh my goodness, but this time chance of run out, it is gone.
The wide which is given by the umpire, but again the Zaman Boys Kalladka doing the same mistake. I already mentioned if the opposition team has got any opportunity to come back, then they need to pick the wickets. But I think the opposition they are helping the fielding team to get the wicket. Once again, perfect piece of fielding by the fielder at short third man. A good return as well. But the Mukhtar is the batter. Unfortunately, is back into pavilion. Imtiaz is the batter. Is back into pavilion. 33 for the loss of 7 wickets. Now only 3 wickets remaining in the Zaman Boys Kalladka. But they have to get another 21 more runs to win this match. 21 to get. Make it correct. 32. It's not 33. Only 1 run in that over. That is a run out. So that means only 1 run which is given in the form of extra. Again, went for the reverse paper, missed it complete. Then wicket keeper behind the stump did the rest. It's a 32 for the loss of 7 wicket. 22 more runs required for the victory. What a match is going on here. Oh, this is a lovely delivery there from Jamshid. Just you knows that he's bowling to the fresh leg. Nizam is a bowler. Nizam is a bowler. Is bowling from the far end. So far is bowled well. 2 deliveries. One more identical mirror display of the previous delivery. Absolutely action replay, isn't it? Exact copy of the previous one. Almost the same line. The same reaction coming from the batter, and wicketkeeper also kept the ball very nicely and back to bowler. So 32 for the loss of 7 wickets. Struggle time continues here. Again outside on the next time. Batsman left the ball, but ball within the reach of the batter. Total misjudgment. Fantastic over is in progress from Nizam. Now it's a penalty. Now it's a penalty. Too early. That means Red Wings, they're taking a lot of time, isn't it? Absolutely, it's going to be disaster. This is just the 6th over is in progress, and there exceeds their time limits. This time again, lovely, fantastic, absolutely flum. It's no doubt at all in that occasion. The back foot absolutely right in the middle stump. And what a fantastic over from Nizam. Really, it's a great over there from Nizam, isn't it? The turning point of this match. 4 deliveries, no run, and picked up a wicket. Last ball remaining is over. The 5 deliveries bowled. 5 deliveries he bowled and picked up 2 valuable wickets. It's a 32 for the loss of 8 wickets. Zaman Boys Kalladka. Still, I want to say they can do the job if you play sensibly. But I think as a bowler, Nizam is already. They make the thing so easy for Red Wings Kujatbal to win this match, because they wanted 2 wickets. They wanted to get only 2 wickets. They wanted to get to celebrate their entry in the final. But cricket, everybody knows that I already mentioned earlier. It's not like that you are picking at 8 wickets. Things is all over. And there are so many examples. Even the number 9, 10 batsmen did the job for the team. So job which is not yet over. 22 to get. 19 balls remain. A little correction, 13 balls remain. Again, a fantastic over. What a great over. I think it's a maiden over. He bowled a maiden over. 1 wide ball is bowled. And it's not a maiden. 1 wide ball is bowled. And that means 1 single run conceded. Only single run conceded in this over, and he picked up 2 valuable wickets. What a fantastic over here for Red Wings. Now 22 to get from 12 balls. Asking run rate 11 runs per over. And team Red Wings are looking in top. Looks like the new batter is Aris. Is on non-striker's end.
Jersey number 12 is on non-strikers end. Little bit of correction in the scoreboard. It's a 33 for the loss of 8 wicket. 33 for the loss of 8 wicket. That means that they need to get another 21 runs to win this match in 12 balls. Right arm over the wicket pass ball. This time a batsman tries that, not quite getting hold of that one properly. He will going to get a single for that with the single scoreboard numbers on to 34 for the loss of 8 wicket. So new batter is on strike, number 10 batter, and Taslim bowls. This time going for the expansive drive, but not quite getting hold of that properly. But fielder is there in the long off. He'll going to cut it off. While going to field that one. One more single. Taslim he will not going to bother about that. After that he's bowled a very expensive over 13 runs in the first over. He's just responsible to bring opposition team to back in the game. But here he's bowling a 7th and very important for his team, and still they have to get another 19 runs to win this match. This time he bowls, drives that one straight to the hands of Bhagwan. Slight a bit of fumble. Agnesh little correction down at short mid wicket region, fields the ball. The batsman picked up a single for that. With the single score numbers on 36 for the loss of 8 wicket. The serve number 7 is in progress. Bowler Taslim bowls, right arm over the wicket. This time he went for the big shot, opportunity for the fielder, but he won't get there. But after one bounce he collected, and ample time for the batter to complete the single. Taslim will going to not bother about that single. You know exactly that they need to restrict the sixes and boundaries. Now one more fielder you need to bring inside the ring. This is going to be a golden opportunity, isn't it? This is going to be a golden opportunity. It's 37 for the loss of 8 wicket. And over number 7 is in progress. Right arm over the wicket, he bowls. Wow, what a fantastic delivery. But still there is a single. Still there is a single. With that single score numbers on to 38 on the board. That 38 for the loss of 8 wicket. And here is again the bowler. Right arm over the wicket. This time he lofted, but I think the ball is going to land it inside the boundary line, going to the hands of the fielder, out of the fielder in the mid wicket. Once it looks like the batsman hit that one in the gap, at least it's going to be a boundary. But unfortunately, ball which is fielded inside the boundary line. Couple of runs has been taken. 40 for the loss of 8 wicket. Last over remaining. 14 runs required for the victory. Have a look at that one in replay. The ball is in there for a while, but right in the gap. Very good job done by the fielder in the mid wicket. Just inside the boundary line, he managed to cut it off. Now 14 to get into the final of this prestigious Sauhardha Trophy 2023. The 2 wickets in hand. Now I think without permission from the umpires, I request don't enter into the ground. They need to take the permission because already they're late. They're from the fielding team. Nizam bowling the last over. 14 to get. The first ball. Oh, it's gone. He's gone. He's bowled him. This is a huge wicket. What a fantastic bowling performance here from Nizam. What a great performance here from Nizam. He's a bowler who really brought his team into the track. Now only 1 wicket remaining for Zaman Boys Kaladka. But the run which is required for them is 14. Having 1 wicket in hand, getting 14 runs in 5 balls might
it's a big ask. Now 5 balls remaining, 14 runs required for the victory. Absolutely, Red Wings are looking in top. But you can't say anything in cricket. The number 11 batter is on strike. Went for the reverse sweep, top edge, opportunity, that's it. Red Wings entering into the final of this prestigious Sauhardha Trophy 2023. At last the dreams which is comes true here for Red Wings, Kunjat Bail, because they definitely in this UCC cricket ground, if you are going to the final means it's going to be a great feelings. Absolutely, it's going to be a golden moment here for Red Wings Kunjat Bail. At last they managed to enter into the final, defeating one of the best team in the local pool. And Zaman Boys Kaladka, looks like their batting department is not really up to the mark. And it's not a day which belongs to Zaman Boys Kaladka, because they're losing their second semi-final. They're losing their second famous semi-final in the same day. But Red Wings will definitely made their day very memorable one. I request Red Wings players, first you need to complete the signatures. ದಯಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕು Red Wings. What a match, what a fantastic match. But I think the Red Wings really handled the pressure in the last, and because of the bowler did a great job. And wait and see which player will be the man of the match of this semi-final. ಅಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ ಬೈಲ್ ಹಾಗೂ ಟೋರ್ಪಡೋಸ್ ಕಾನ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಎರಡೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು, ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ ಬೈಲ್ ಹಾಗೂ ಟೋರ್ಪಡೋಸ್ ಕಾನ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕು ದಯವಿಟ್ಟು. So now it's a time to announce the Man of the Match award, and Man of the Match award which goes to the batter, one who was scored in a difficult condition. This condition is not that much of suitable for the batters, but in this difficult condition, the left-hand batter of Red Wings, Kishore, not only batted well, scored 21 valuable runs, but is kept well and responsible for the 2 wickets behind the wicket. So that is just as the Man of the Match. May I request Kishore, please come forward and collect your Man of the Match award for his outstanding batting performance of 21 valuable runs, and then behind the wicket he kept well. After we are going to complete the signatures, we're going to start the mega final of this prestigious Sauhardha Trophy 2023, and which is organized under the great leadership of Alfaz, with the support of Gori Young Boys, and with the sweet memory of late Suresh Bihan. And we are all now just waiting for the mega final of this prestigious and of course Ashok of Gori Young Boys will go to present the Man of the Match award for Kishore of Red Wings Kunjat Bail. So, and it's going to be a presentation ceremony in our presentation dice, and I request 10 media, cameraman,
Please cover that very good moment. Yes, and Kishore will go into present. We will go into collect a man of the match award from one more fantastic striker of the ball. Ashok is the dominator, one of the very rare opening batter who really enjoyed his dominating batting performance for Gori young boys. Kishore deserves this man of the match award. The way that is batted in a difficult condition and kept very well responsible for the 2 wickets in the form of stump out and run out. So we'll take a 5 minutes break, and after that we'll go to start the mega final. Thank you. ಅಲ್ಲಿ ಪಿಚ್ನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಆಡಬಾರ್ದಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಹಲೋ
ಅಲ್ಲಿ ಟೋರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನ ಹಾಗೂ ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ಬೈಲ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ಬೈಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೋರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನ ಪ್ಲೀಸ್ ಕೇಮ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಫಾರ್ ಟಾಸ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. So Red Wings Kunjatbhai, after won the toss, they elected to field first and request all the players of the grand finale of Sauhardha Trophy 2023, please start the match immediately. The final, the grand finale, mega final of Sauhardha Trophy 2023 is now going to begin within just a short while between Red Wings Kunjatbhai versus Torpedoes Kana.
Welcome back once again now for the mega final of this prestigious cricket tournament. And all set now for the fantastic tournaments and final match of this tournament. And Sauhardha Trophy 2023, which is proudly organized in this historical cricket ground, UCG cricket ground. Absolutely, it's going to be one of the most successful and memorable cricket tournament, which is organized with the memory of sweet memory of late Suresh Bian. Two teams which came to the final, Torpedoes Khana and in the seeded ranking teams, and in the Mangalore pool they qualify for the mega final, and from local pools the Red Wings they came into the mega final, and now the big final. And certainly I want to say it's going to be a big match, because even Red Wings definitely, even they came from the local pool, but they got a potential. Left arm around the wicket, captain bowls around the legs, batsman misjudging the ball, and wicketkeeper behind the stump collects the ball. Slight bit of changes in opening pair. Ashraf promoted up in the order. Every matches is getting some promotion, and now he came into bat as an opener. Yadnesh. Oh, what a delivery. What a magnificent delivery. Absolutely. Captain is outstanding. Captain is outstanding throughout the tournament. The way that is bowling, it's really no chance at all for Ashraf to survive. The promotion for Ashraf, which is not really working out for Torpedoes Khana. Just like I mentioned earlier, if Torpedoes Khana may be thinking that they can be the favorite of winning this match, but Red Wings, Kunjat Bail, they definitely has got a good players in the side as well. They can give some kind of fight for Torpedoes Khana, because this is a cricket, and especially when you are playing under floodlight, you cannot underestimate any team. But Torpedoes Khana, certainly they came into the final with a fantastic performance, no doubt at all. The way that they came into the final, it's not an easy journey. They defeated one of the favorite NM cricketers, Mangalore, in the first round. Then they came into semi-final and defeated one of the formidable KCCR Kadri in the second round, that is semi-final. And then they came into the big final. And Red Wings also knows that they're playing against the big team. They need to give their more than 100% if they wanted to win the match. And good start given by the bowler, Yadnesh, to Imtiaz. This time again, one more fantastic delivery indeed, beaten by the pace, and that ball, a slight bit of bat which is taken place, so that Imtiaz is off the mark, and he got his first run and for his team as well. One without loss of an wicket. The first over of the power play is in progress. Short fine leg, square leg, short mid wicket. The fielder in the deep long on now, mid-off fielder coming towards the mid-off. That means slight bit of confusion there. The mid-on again going to that position, and long on going to wideish long on. There is a deep long off. Here is the next one. Dries that one now. Just straight to the answer fielder. Chance of run out. Oh my goodness. Oh, of course, the once it looks like the fielder he's got a ball in his hand. Vaishak, he came near to the stump, just thinking about he need to remove the bails. But I think he did a wrong that he wanted to release the ball. But holding the ball in your hand and getting into the stumps, definitely he's got opportunity to make the run out. But at the last moment he wanted to throw the ball and he misses the stump. Imtiaz survives. One for the loss of one wicket. Again the lovely delivery there from Yadnesh. What a good start there from the captain of the side. Won the toss, elected to bowl first, and so far he bowled a absolutely perfect first over. But one delivery is remaining in this over, and Tanveer knows that they did got runs in this over. The last ball which is remaining, this is not a small form of the game. So 8 overs is quite enough for any team to come back. Here is Yadnesh again. Right arm over wicket. This time a wide call by umpire, rightly so. A slight bit of Yadnesh lost his concentration over the line. Maybe the deviation he couldn't manage to control. That ball has got extra deviation, so that they missed the line. Yadnesh bowls. Oh, what a delivery, fantastic. But evenly good, well played there by Tanveer.
played that one upishly, but wide of bowler. Down to deep long off region for a single. So just 3 runs came from that over. A good over there from the captain of the side. After completion of over number first, it's a shackling start here for team Torpedoes Khana. The 3 for the loss of 1 wicket. What a fantastic cricket tournament is in progress. Absolutely. The great leadership. Great leadership there from Alphas. It's not so easy because you are just watching the 3 days of cricket tournament, but more than 3 months of effort which is required for organizer. But Alphas is the one absolutely did a great job with the support of the donors, with the support of Gori Young Boys, and special thanks to Abu Bakar Ashik, the partner of Spritz Saloon, Exim Line, UAE. Thank you very much, sir, for your heartfelt contribution for the success of this cricket tournament. And we would like to give special thanks to each and every donors who were supported for the success of this cricket tournament. This time, first ball, lofted. Oh my goodness, the ball looks like going to be a carry to the fielder there in the deep long off. The captain of the side, I think so, there in the deep in the long off. It's not captain, it looks like the field in the deep long is to try to take the catch. Vaishak there in the deep long off. He's almost reached there, but he's given up, seeing that it's very difficult to take the catch. But a single has been taken there by the batter Tanveer. It's 4 for the loss of 1 wicket. This time Imtiaz first he wanted to get that one very fine down to fine leg region, but seeing that it's a very difficult line to play that one on the fine leg region, so they just played that one at cow point region for a single. It's 5 for the loss of 1 wicket. Nizam is a hero of the previous match. He bowled brilliantly. This time, what you're talking about, he's a hero of the previous match, but even in the final, big final, he want to become a hero, and he's got a very valuable wicket. Tanveer departs. What a fantastic stuff there from Nizam. Absolutely fantastic delivery. Have a look at that delivery. Absolutely no clue whatsoever. Batter Tanveer is known to be one of the fantastic performer. Is back into pavilion. Looks like Torpedoes Khana are here under pressure. They lost 2 wickets, but they only got to 5 runs. Nizam, what a great performance from him. In the previous match also, he picked up 3 wickets for just 1.3 deliveries. Now the new batsman coming to the middle here is Bashit, and what a great player he's been. Fantastic career he has got, Bashit. He got experience of representing for NM Cricketers Mangalore, as well as the young friends who are one of the top 2 teams, and now he's representing for Torpedoes Khana. What a useful cricketer. But in this particular season he's looking outstanding from his bat. So many times he played a fantastic innings for Torpedoes Khana. Now once again a condition asking him to play good innings for his team, because they're struggling in the middle. They lost 2 wickets and they got only 5 runs. But this man, Nizam, is really looking absolutely phenomenal in his bowling performance. Nizam. This time, Bashit lofted it and over the top of the infield. Ball went towards a deep long off boundary, but the fielder will go to cut it off. But ample time for the batter to complete that couple of runs. The fireworks which begins, but not for this cricketing stroke, but somewhere else. The celebration is on here. But the way that Bashit is lofted at one looks like it's going to be a maximum, but under floodlight is not so easy. Ball which is not travelling. That's where the fielder in the mid off has got an opportunity to cut it off just inside the boundary line. But it's a confident looking drive there from Bashit. Absolutely fantastic stroke. 7 for the loss of 2 wickets. Nizam again. Right arm over the wicket. Change up pace. Slower one. They're going for the quick single. Chance of run out. Lost seconds end. But the throw which is not quite enough.
the throw which is not good enough to get the run out, but Bashit is wanted to get that one very fine by playing the switch it. But I think it's a good thinking there by the bowler's point of view as he bowled the slower one. So he just survives. 8 for the loss of 2 wickets. Fantastic competition is on in this mega final. This time Imtiaz played a very good reverse stroke, but this time they will going to get only single for that because a very, very good piece of fielding there by the very experienced campaigner Santosh. Absolutely fantastic fielding, isn't it? Just quickly running back, denying the second from this batter, and one more good over which is completed, and 4 came from that over. 6 came from that over of Nizam, and he picked up one valuable wickets. The wicket of Tanveer he got, and after completion of over number 2, Torpedoes Khana is going exactly at 4.5 runs per over, 9 for the loss of 2 wickets. This is the same start here for Torpedoes Khana when they played against KCCR Kadri. There is slight a bit of a slow start, struggling in the middle, but acceleration which just came in slog overs when Akram is entered into the ground. He is the one changing the gear and getting some big overs for his team. And it is quite enough for Torpedoes Khana to defend the total against Kadri. Imtiaz is on strike now. Imtiaz knows that he is a key player now to get some partnership along with Bashit, two experienced campaigner. Now captain of the side continues. Yajnesh balls once again is right on target. Slight a bit of ball which is on the middle and off stump, and Imtiaz managed to get the single down to short cow point region. 10 for the loss of 2 wickets. So tomorrow one more big day for cricket in Nehru Maidan, Adinatheshwara Trophy 2023. The second day, the final day of that cricket tournament. Top teams, once again ranking teams, will go into a clash. And that Sunday, left arm Yajnesh bowls. This time batsman leaves, but umpire says it's a wide. 1+1, 2 more to total. Extra runs. It's going to be a very important year for team Red Wings to stop all this extra, because they're playing a big final and they're playing against one of the top team. They need to control that extras. 12 for the loss of 2 wickets. Yajnesh again, left arm. Oh, fantastic! That's the beauty of the delivery, isn't it? What a great piece of bowling there from Yajnesh. Just I want to see it in a replay. The way that ball is taking a turn, the batsman almost looks like he's just wanted to reach the pitch of the delivery, just like you were watching in a overarm cricket when the off spinner bowled the typical off spin delivery. But he's a left-hand bowler. He's bowling a leg cutter, and have a look at the delivery. Absolutely fantastic. Magnificent. Just leaving the left-hand batter. Again, Imtiaz left the ball. The wicketkeeper again not up to the mark. This time directly that is gone. Imtiaz is back in the pavilion. He just misjudging the line of the ball. He thought it might be a wide, but ball well in the reach of the batter, just inside the line. But wicketkeeper behind the stump, Tanzim, I think so. He's just got a direct hit in the non-striker's hand. It's 13 for the loss of a 3 wicket. Now it's a 13 for the loss of 3 wicket. The over number 3 is in progress. It's a 13 for the loss of 3 wickets. One more wicket is back into pavilion. Absolutely good work there by the wicketkeeper behind the stump, quickly realizing that was well within the reach of, we can see that absolutely perfect decision coming from umpire Harish Padil. I'm not really likes that body languages, because you need to give the respect for the umpire decision, because it's not an easy job, isn't it? That ball is absolutely within the reach of the batter. That is best ball passing that line, just inside the line. It's a 13 for the loss of 3 wicket.
So that I'm really even the non-striker have to tell, because he's the one who can see the line of the ball. But I think it's not a good to see that because the body language is always going to be very important in cricket. Everyone is watching you, not only in not only the live, not only the spectators watching you in the ground, but everywhere, because cricket is definitely going to be very advanced. The live telecast of this cricket tournament absolutely always going to be a difficult job for the umpires, isn't it? When it's going to be a live telecast, very always going to be a challenge for the umpires. So you need to understand that, isn't it? You need to understand that it's not an easy job. Umpiring is one of the most difficult job, especially in underarm cricket. I want to say, underarm cricket is not so easy. It's 13 for the loss of 3 wicket. "12 on the board." So 12 on the board, 12 for the loss of 3 wicket. It's over number 3 is in progress. So very good competition is on here. The Red Wings versus Torpedoes Khana. Even the Torpedoes Khana lost 3 wickets, but still they got a potential of bouncing back. Yadnesh bounce nicely driven. Bashit straight to the hands of extra cover. And I think the fielder is misfielded that one, Kishore. And because of that, the ball went towards the deep extra cover region for a single run. "13 for the loss of 3 wicket in the over number 3 is in progress. The good competition is on between these two very good teams. Left arm. Slower one. This time chance of run out. And again Kishore is not up to the mark. Kishore is not up to the mark. And absolutely what could be a chance of run out. Kishore is just missing that one. Maybe he's a wicket keeper. And slight a bit of he's not enjoying the fielding. Now 15 for the loss of 3 wicket. Last ball remaining in this over. It's 15 for the loss of 3 wicket in the over number 3 is in progress. Again Yajnesh back to his bowling mark. Left arm around the wicket. Absolutely perfect one. Batsman going for the square cut. Missed it completely. 3 gone after completion of over number 3. Torpedoes Khana searching for the right track. 15 for the loss of 3 wicket. I'm not saying that 15 is not a small total under floodlight. The 15 is always going to be a big total because this is not a 5 overs game. This is an 8 overs game, so that Torpedoes Khana has got plenty of time to recover. 5 runs per over they're going. But problem is that for Torpedoes Khana is that they lost 3 wickets, but they got some good hitter in the side, and they can handle the pressure, especially when you come to the acceleration is concerned in the 2 hours. But so far, Red Wings Kunjat Bail are looking in a top after winning the toss, elected to field first, and especially the captain of the side, leading from the front, is bowled 2 very good overs, and it's one more over will going to start from the far end. Looks like the bowling change. Sustan brought into attack. Sustan to bowl that over. So previous match also is bowled brilliantly. Risham Bashit across the line, try to swing that one. Might be that ball is a short pitch, which is outside and off stump, but Bashit wanted to play against the line, across the line. That's why he couldn't manage to get the timing behind the stroke. And Sustan on his follow through fields the ball, and back to his bowling mark. There's that fantastic delivery, Flum in front of wicket. What a great one there from Sustan, outstanding delivery. Now Torpedoes Khana are looking in a serious trouble. The Bashit is got out in the form of a leg before wicket. Have a look at it one replay. Oh, absolutely shuffled across the line of delivery. That's a big problem for the batter. That is shuffled across the line of the delivery. But something is happening here for wicketkeeper behind the stump. Looks like ball which is hitting his eyes. Ball which is hitting his eyes. And I want to see it in a replay. What really happened? Just I want to see that Sustan bowled a beautiful delivery. Absolutely perfect one.
The batsman misjudging, and oh, ball after hitting his leg, and ball hitting the eyes of wicket keeper, and that might be the nasty blow, absolutely nasty blow there for wicket keeper's eyes. Because the underarm cricket is not an easy job, because wicket keeper almost standing very close to the stumps, isn't it? It's doesn't like it's in the overarm cricket. Even for the spin bowling, the wicket keeper standing a slight a bit of 2-3 steps away from the stumps. But in underarm cricket, the wicket keeper is sitting very close to the stumps, so it's sometimes very difficult for them to get away from that extra bounce. And after getting a deviation, this is 15 for the loss of 4 wicket, and hero of the previous match, Akram, came into middle. Once again a difficult condition. Sustan. Oh, what a fantastic delivery. Looks like it's going to be a very close one. One more fantastic delivery there from Sustan. Akram again, no clue whatsoever, because it just came in. It's not an easy condition under floodlight to get an eye in. And that's why Sustan is just enjoying his bowling performance. Again he bowls. This time Flum, absolutely Flum. One more wicket is back into pavilion. That was an identical mirror display of the previous dismissal I was talking about. The same line, the same length, and the same the reaction which is came from the batter is not really reading the turn of the ball. They're shuffling across the line of the delivery. That's a big problem. Have a look at that one. This time maybe he's not shuffled across, but his back leg is absolutely right in front of a middle stump. It's 15 for the loss of 5 wicket. Now Tarparas Khana definitely they're feeling pressure, because Akram, the hero of the previous match, is back into pavilion. Shafiq is a batter, just came into middle. It's a 15 for the loss of 5 wicket. Absolutely, they're looking in tremendous pressure for Tarparas Khana. Right above wicket, Sustan bows, and there's an intelligent cricket there from Shafi. This is a kind of technique you need to be implement when the bowler is attacking your stumps. That they have to slide a bit of different technique. The technique in the sense just getting the ball into your bat to get that one very fine by playing the sweep shot. 16 for the loss of 5 wicket. So Sun bowls. This man Ashwin drives that one down to backward position. They're going for the second. Absolutely absence of mind by the fielder, isn't it? But presence of mind here from Ashwin. Seeing that the fielder is very lazy there in the backward point region. He's just relaxing. Ashwin just calling his partner for the second. And they completed that couple of runs. It's 18 for the loss of a 5 wicket. The over number 4 which is completed. A fantastic over which comes to an end. So 18 for the loss of 5 wicket, and Gopi, certainly it's not the kind of the batting performance what we are really expecting from Tarparas Khana, but that only because of the team Kunjat Bail absolutely looking in a top. And what a fantastic 4 overs from the bowlers of Kunjat Bail, especially the captain leading from the front, and Sustan bowled brilliantly, and even Nizam is bowled absolutely perfect one. And 18 for the loss of 5 wicket. Now I think Gopi, some sensible batting which is badly required here for Tarparas Khana if they wanted to get any fighting total. But 40 plus runs definitely wanted to get it, because even Red Wings also got some good batting department. एग्जैक्टली सतीश, बिल्कुल सही बात आपने फरमाया. इस वक्त सेंसिबल बल्लेबाजी की जरूरत है. पहले 4 ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन रेड विंग्स के गेंदबाजों ने दिया. एब्सोल्युटली फैंटास्टिक पीस ऑफ बॉलिंग performance given by the bowlers of Red Wings Kunjat Bail in the first 4 overs. They conceded just 18 runs and got 5 valuable wickets of Tarparas Khana. क्रीज पर मौजूद इस वक्त बल्लेबाज शफीक और
अश्विन इस वक्त मौजूद है और यहाँ पर गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए गेंदबाजी तस्लीम दाइना तो ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया खूबसूरती के साथ, एक्स्ट्रा कवर पर गेंद पहुंचते हुए 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा और 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज यहां पर संतुष्ट हो चुके हैं। 20 रन 5 विकेट के नुकसान पर और जहां तक क्रीज पर मौजूद ये दोनों बल्लेबाज इस वक्त शफीक और अश्विन के ऊपर एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त आन पड़ी है, एक बेहतर साझेदारी यहाँ पर निभाने की। और यहाँ पर देखते हैं वो किस तरीके से अपनी टीम की नैया को सही तट तक पहुंचा पाते हैं, मझधार से निकाल कर रहा है तो बढ़ता विकेट। ये गेंद ड्राइव किया बैक टू द बॉलर की दिशा, वाइड ऑफ द बॉलर इनफैक्ट गेंद पहुंची मिड ऑफ पर, नॉट मोर देन अ सिंगल और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है 21 रनों पर। 21 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। एब्सोल्युटली tidy contest is now continuing here in this grand finale of prestigious cricket tournament Sauhardha Trophy 2023। गेंदबाज फिर से एक बार तस्लीम, ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव किया खूबसूरती के साथ, गेंद जाते हुए कवर पॉइंट की दिशा में, नॉट मोर देन अ सिंगल। क्रीज पर मौजूद अश्विन और शफीक इस वक्त ये जान चुके हैं इस वक्त उन्हें क्रीज पर रुकना है, उन्हें रन से बनाने सेंसिबल क्रिकेट इस वक्त अपनानी है क्योंकि 5 चोटी के बल्लेबाज इस वक्त पवेलियन वापस लौट चुके हैं और इस वक्त उनकी ये दोनों बल्लेबाजों की उपस्थिति उनके लिए बेहद ज़रूरी है, उनके टीम के लिए बेहद ज़रूरी है। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए ये दोनों बल्लेबाज इस वक्त सेंसिबल होकर स्ट्राइक रोटेट करते हुए और तस्लीम दाइना तो ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव किया, बेहतर फील्डिंग फॉलो थ्रू में इस वक्त करते हुए तस्लीम फॉलो थ्रू में गेंद को रोक लिया उन्होंने। मिड लेग स्टंप पर गेंद थी, गेंद को ड्राइव किया था, गेंदबाज की दाईं ओर से ड्राइव करना चाहते थे लेकिन ठीक तरह से गेंद को खेल नहीं पाए और गेंद बैक टू द बॉल की दिशा में पहुंची। बेहतर गेंद थी तस्लीम के, अपने पैरों में कुछ हद तक बाधा इस वक्त महसूस करते हुए, मांसपेशियों की खिंचावट जिसे कहते हैं हैमस्ट्रिंग इंजरी। और एक बार फिर से गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इस बार गेंद को रिवर्स शॉट खेलना चाहा अपील और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है। गेंद सीधे इस वक्त टकराई थी पैर पर और इस वक्त बल्लेबाज कहते हुए कि उनके हाथ पर गेंद टकराई है और देखना यह है कि इस वक्त तृतीय अंपायर के लिए मांग की गई है और देखते हैं यहां पर तृतीय अंपायर क्या निर्धार देते हैं। रिवर्स शॉट खेलना चाहा था, तो जहां तक का सवाल है इस वक्त बल्लेबाज कहते हुए कि उनका हाथ पर गेंद लगी है, तो यहां पर देखते हैं असल में क्या हुआ था। तो स्पेशल थैंक्स इस श्रृंखला के लिए, इस श्रृंखला की सफलता के लिए कई महानियों ने अपना योगदान दिया, तो उनके लिए एक स्पेशल थैंक्स विशेष अभिवादन हम करना चाहेंगे एक बार फिर से जनाब अबू बकर आशिक पार्टनर स्पिट्स सैलून एक्जिम लाइन यूएई और जनाब मुदस्सर कूर्ग न्यूक्लियस एग्जीबिशन दुबई यूएई और एक बार फिर से स्पेशल थैंक्स हम यहां पर देखना चाहेंगे।
और गेंद उनके हाथों पर टकराई थी, तो इस वजह से यहाँ पर इसे वापिस नॉट आउट घोषित। तो यहाँ पर 1 रन बल्लेबाज प्राप्त कर चुके हैं, तो 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 23 रनों पर। 23 now for the loss of 5 wickets in the over number 5 in progress। कुछ बातचीत इस वक्त जारी है बल्लेबाज और अंपायर्स के बीच, और इसी के साथ ओवर नंबर 5 की समाप्ति हो चुकी है। 5 overs completed, 23 on the board, 5 wickets lost and 3 overs remaining in overall calculation in their innings। और फिर से एक बार गेंदबाजी इस वक्त हमसे दूर वाले छोर से आगे बढ़ाते हुए, और इस बीच सामना करने के लिए तैयार दाहिने हाथ के बल्लेबाज तो सुरेश भी एंड की ओर से गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए सुस्तान सामना इस वक्त करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज शफीक, और छठा ओवर उनके पारी में यहां पर शुरू होता हुआ। सुस्तान शफीक के लिए पहली गेंद दाहिना हाथ ओवर द विकेट, हल्के से गेंद को मोड़ दिया इस वक्त मिड विकेट पर सेंसिबल क्रिकेट अपनाते हुए, और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 24 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर। निस्संदेह एक बेहतरीन गेंदबाजी का सिलसिला यहां पर जारी रखते हुए रेड विंग्स कुंजत पहल के गेंदबाज फिर से एक बार गेंदबाज की गेंद, इस बार गेंद को खेला जस्ट वाइड ऑफ द बॉलर, मिड ऑन की दिशा में गेंद पहुंची। 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। 1 more run still added to the total, and with that single run the scoreboard moving up to 25 now for the loss of 5 wicket। और छठा ओवर इस वक्त प्रगति पर। इस बार गेंद को खेल दिया, गेंद इस बार निशाना चूक चुका है। दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ पड़े, स्ट्राइकर रन पर खतरा हो सकता है। यहां पर देखना यह है कि बल्लेबाज पहुंच चुके हैं या नहीं। तो इस वक्त यहां पर थोड़ा सा वाइड थ्रो था, और आखिरकार आगे की ओर जाकर गेंद को फील्ड करने के बाद विकेटों पर थ्रो किया था। विकेटों पर गेंद टकराए थे, बिल से डिस्टर्ब हुए थे, लेकिन देखिए यहां पर क्या हुआ था। एक्चुअली व्हाट वाज हैपन इन द रिप्ले, देखिए यहां पर निशाना चूका था, बैकअप होता हुआ वहां पर थ्रो पहुंचा स्ट्राइकर एंड पर, और आखिरकार यहां पर और विकेटों पर निशाना दागा था, और उनका निशाना बिल्कुल सही बैठता हुआ। और इस वक्त दो रन उनके खाते में जुड़ेंगे, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 27 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर। और कांटे का टक्कर हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है इस ग्रैंड फिनाले मैच में। इस सौहार्दा ट्रॉफी 2023 के अंतर्गत जनाब अल्फाज इनके सारथ्य में इस श्रृंखला की शानदार प्रगति यहाँ पर होती हुई है। गेंद इस वक्त इस बार नहीं बच पाएंगे, इस बार नहीं बच पाएंगे। गेंद को बिना देखे इस वक्त रन चुराना चाहता, गेंद वहीं पर थी, और आखिरकार बल्लेबाज को वापस लौटने का कोई मौका नहीं। विकेट कीपर ने तेजी के साथ गेंद को फील्ड करने के बाद यहाँ पर विकेट चटका दिया। देखिए किस तरीके से हुआ था यहाँ पर, और आसान सा आउट होता हुआ 1 विकेट और गिर चुका। इट्स 27 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स इन द ओवर नंबर 6 इन प्रोग्रेस। तो यहाँ पर जैसा कि अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कम से कम 40 का आंकड़ा यहाँ पर पार करना होगा टॉर्पेडोज काना को, अगर एक चुनौती भरा स्कोर खड़ा करना है इन हालातों में, अंडर दिस कंडीशन, अंडर फ्लड लाइट्स। आमतौर पर और क्रिकेट मैदान पर देखा गया है कि अंडर फ्लड लाइट्स रन बनाना बल्लेबाज के लिए काफ़ी हद तक, कुछ हद तक कहना पड़ेगा, कठिन साबित हुआ। इससे पहले कई निदर्शनों में हमने देखा है, और यहाँ पर इस वक्त परिस्थिति के अनुगुण बल्लेबाजी करने की कोशिश करते हुए इस वक्त टॉर्पेडोज काना के बल्लेबाज, और वो जानते हैं इस वक्त कम से कम 40 का आंकड़ा उनके टीम को पार करना है अगर एक चुनौती भरा स्कोर यहाँ पर खड़ा करना है, क्योंकि उनके पास सशक्त गेंदबाजी का लाइनअप है। और यहाँ पर रेड विंग्स का जहाँ तक सवाल है, इस वक्त रेड विंग्स को रोकना है टॉर्पेडोज काना के बल्लेबाजों को 40 के आंकड़े तक पहुँचने के लिए। तो देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। और जहाँ तक रेड विंग्स का सवाल है, इस श्रृंखला में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देते हुए वो इस श्रृंखला के मेगा फाइनल में पहुंच चुके हैं। और जहां तक टॉर्पेडोज काना का सवाल है, उन्होंने भी अपना बेहतरीन श्रेष्ठ प्रदर्शन यहां पर दिया है। एनएम और केसीसीआर कतरी जैसे घटानुघटी शक्तिशाली टीमों को पराभव करने के बाद उन्होंने फाइनल में प्रवेश दर्ज किया है। पिछले मैच में रेड विंग्स कुंजत पहले सेमीफाइनल मैच में जमन बॉयज का लड़का को हराया था, जो कि एक बेहतर टीम के रूप में जाने जाती है अंडरआर्म क्रिकेट की।
और यहाँ पर मुकाबला इस वक्त जारी है इस सौहार्दा ट्रॉफी प्रेस्टिजियस बेशकीमती सौहार्दा ट्रॉफी 2023 का खिताब अर्जित करने के लिए। तो गेंदबाज इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, सुस्तान गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेला, इस वक्त गेंद पहुंची शॉट कवर की दिशा में, नॉट मोर देन अ सिंगल, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 28 रनों पर 6 विकेट के नुकसान पर। और जो नए बल्लेबाज है सिनान ऑफ द स्ट्राइक हो चुके हैं सिंगल्स के साथ। अश्विन इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। अश्विन इस वक्त क्रीज पर जमने की पूरी कोशिश करते हुए और लगभग जम भी चुके हैं, और इस वक्त उन्हें अपनानी है एक सेंसिबल क्रिकेट। सुस्तान अपनी ओर की अगली गेंद, ये गेंद इस बार लेग स्टंप पर आती हुई, नो बॉल का इशारा, रन के लिए दौड़ पड़े, नजदीकी मामला, लेकिन निशाना चूक चुका है, बल्लेबाज अपना बल्ला खो चुके हैं, लेकिन दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े इस वक्त काफी तेजी के साथ। ऐसा लग रहा है कि 100 मीटर्स की दौड़ वो दौड़े थे यहाँ पर और आखिरकार अपने मंजिल तक पहुंच चुके इससे पहले कि थ्रो पहुंचे स्ट्राइकर एंड पर, और 2 रन उनके खाते में यहाँ पर जुट चुका। 2+1 इनफैक्ट 3 रन एडेड टू द टोटल, नो बॉल और फ्री हिट का इशारा। सो 3 रन नाउ एडेड टू द टोटल, और हर रन इस वक्त बेशकीमती। और यहाँ पर अश्विन मंजिल पहुंचने के बाद वो वहां पर बैठ गए, और इस वक्त 3 रन टोरपोडोस खाना के खाते में जुड़ चुके हैं। 31 for the loss of 6 wickets, and this is the 6th over in progress। और सुस्तान एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, अश्विन अपने जूते के फीते को इस वक्त बांधते हुए और अपनी अगली गेंद का सामना करने के लिए इस वक्त तैयार। सुस्तान दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद इस बार अश्विन के लिए उछालना चाहा, ओ संपोर्ट का मौका था, लेकिन विकेट कीपर यहाँ पर गेंद को गंवाते हुए, और फ्री हिट गेंद भी थी तो इस वजह से बल्लेबाज बच चुके हैं। और ओवर की समाप्ति 6 गॉन, 31 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट, स्टिल 2 ओवर्स लेफ्ट इन ओवरऑल कैलकुलेशन इन देयर इनिंग्स। और जहाँ तक सवाल है इस वक्त 12 गेंदों का, तो 12 गेंदों में कम से कम 15 से 20 रन यहाँ पर बटोरना है टोरपोडोस खाना के बल्लेबाजों को, माफ कीजिए टोरपोडोस खाना के बल्लेबाजों को, अगर उन्हें एक चुनौती भरा स्कोर यहाँ पर खड़ा करना है। तो देर रात की ओर इस वक्त बढ़ता हुआ 10:40 यहाँ पर हो चुके हैं, और सौहार्दा ट्रॉफी 2023 दिवंगत सुरेश बी अन्ना की मधुर याद में इस श्रृंखला की शानदार प्रगति यहाँ पर होते हुए, और गोरी यंग बॉयज के सर्व सदस्य और जनाब अल्फाज इनकी कड़ी मेहनत की, कड़ी परिश्रम की बदौलत इस श्रृंखला का आयोजन किया गया है। और आज इस श्रृंखला का तीसरा और अंतिम दिन का मेगा फाइनल मैच, ग्रैंड फिनाले इस वक्त प्रगति पर। 7वां ओवर शुरू होता हुआ तस्लीम गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए, नई ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयार सिनान, फील्डिंग में जमावट करने के बाद तस्लीम अपनी ओवर की पहली गेंद, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, इस बीच सिनान के लिए यह गेंद अच्छी गेंद, ऑफ स्टंप पर नहीं लेकिन ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर गेंद थी, इस वक्त वाइड का इशारा, और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है इस वक्त 32 रनों पर 6 विकेट के नुकसान पर। 32 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट इन द ओवर नंबर 7 इन प्रोग्रेस। बेहतरीन एक्सक्विजिट लाइव टेलीकास्ट 10 मीडिया द्वारा इस वक्त किया जा रहा है। और जहां तक सवाल है बची हुई गेंदों का, तो 12 गेंदें अभी भी बाकी उनकी पारी में। अश्विन इस वक्त पेविलियन वापस लौटते हुए, शायद काफी थके मांदे वो नजर आते हुए इस वक्त, और आखिरकार मेरे ख्याल से रिटायर्ड हर्ट के रूप में वो इस वक्त पेविलियन वापस लौटते हुए। और हालांकि ह्यूमैनिटी जिसे कहते हैं, तापमान इतना है कि रात के वक्त भी इंसान को पसीना आता है इन हालातों में। और खासकर मंगलूर के वातावरण के बारे में अगर कहा जाए तो अप्रैल मई महीने में लगभग तापमान 39 से 40 डिग्री तक पहुंच जाता है। तो ऐसा कहना पड़ेगा खिलाड़ियों को ना सिर्फ दिन में बल्कि रात में भी पसीना आना शुरू हो जाता है, अगर थोड़े से भी वो अपने शरीर को व्यायाम दे। और निश्चित रूप से यहाँ पर काफी थके मांदे अश्विन पेविलियन वापस लौट चुके हैं। तस्लीम इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए, दाहिने हाथों पर द विकेट, अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। ये गेंद
इस बार ड्राइव किया खूबसूरती के साथ, मिड ऑफ की दिशा में गेंद जाती हुई, एक रन बल्लेबाज को मिलेगा, एक्स्ट्रा कवर पर रख आना पड़ेगा गेंद को जब तक फील्ड किया गया। एक रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपना छोड़ यहाँ पर बदल चुके हैं और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 33 रन पर, 33 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स इन द ओवर नंबर 7 इन प्रोग्रेस। तस्लीम फिर से एक बार तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद रिवर्स शॉट इम्प्रोवाइजेशन टॉप एज, लेकिन वहां पर कोई फील्डर नहीं, डीप बैकवर्ड थर्ड मैन से फील्डर दौड़कर आए, एक रन मिला जरूर और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 34 रनों पर। दोनों टीमों के समर्थक सपोर्टर्स इस वक्त प्लेयर्स डगआउट के करीब बैठे हुए अपनी टीम का मनोबल बढ़ाते हुए तालियों के साथ, सीटियों के साथ, और कुल मिलाकर ऐसा कहना पड़ेगा एक बेहतरीन मेगा फाइनल मैच इस बेहतरीन श्रृंखला के अंतर्गत यहां पर खेला जाता हुआ। फिर से एक बार तस्लीम, ये गेंद इस बार रिवर्स शॉट खूबसूरती के साथ गेंद को निकाला, बैकवर्ड थर्ड मैन फील्डर के सिर के ऊपर सर, गेंद सीमा रेखा के इस बार उछलकर रास्ते पर जा गिरे, लेकिन गेंद को रोकने में सफल बेहतर तरीके से, और यहां पर सुदैव वशात भगवान की दया से उन्हें कुछ ज्यादा चोट इस वक्त नहीं आई है, कुछ भी चोट नहीं आई है, संतोष थे फील्डर, लेकिन एब्सोल्युटली फैंटास्टिक एफर्ट इस वक्त उन्होंने किया था। हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले, देखिए किस तरीके से इस बार गेंद को खेला गया था और गेंद इस वक्त बैकवर्ड थर्ड मैन की ओर दिशा में बढ़ी थी, देखिए गेंद के पीछे, और इस बार ब्रिलियंट, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, गेंद को सीमा रेखा के अंदर उन्होंने ढकेला, हालांकि खुद सीमा रेखा से बाहर चले गए, लेकिन अपनी टीम के लिए कम से कम 2 रन बचाने में सफल। तो एक फील्डर इस वक्त अंदर बुला लिया गया है, उनके निगदित समय समाप्त हो चुका है गेंदबाजी फील्डिंग साइड के, और तस्लीम इस वक्त गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद इस वक्त कुछ ज्यादा हद तक लेग स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रही थी, मिस जजमेंट इस वक्त बल्लेबाज द्वारा, उन्होंने गेंद को छोड़ दिया था कि शायद वाइड हो सकता है, लेकिन गेंद कुछ ज्यादा हद तक लेग स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रही थी और सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। तस्लीम फिर से एक बार गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए और सिनन सामना करने के लिए तैयार, ये गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहा, अपील इस वक्त जारी है, लेकिन यहां पर अंपायर पर कोई प्रभाव नहीं, गेंद को छत तक ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई, और जहां तक सवाल है रनों का, तो रन से इस वक्त मिलेंगे 37 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका 6 विकेट के नुकसान पर। इट्स 37 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट इन द ओवर नंबर 7 इन प्रोग्रेस। अंतिम गेंद बाकी इस ओवर में, तस्लीम इस वक्त तैयार, अंतिम बार रिलवान सामना करने के लिए तैयार, बराबर का टक्कर यहां पर जारी, और इस बीच तस्लीम इस ओवर में अंतिम बार दाहिना तो ओवर द विकेट, ये गेंद ड्राइव करना चाहा, बल्ले का भीतरी किनारा, गेंद पहुंची शॉर्ट फाइन लेग पर, नॉट मोर देन अ सिंगल, 38 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट। 7 ओवर्स कंप्लीटेड, 7 ओवर की समाप्ति, 38 रन बच चुका, बेहतर ऐसा कहना पड़ेगा, एक बेहतर कमबैक अंतिम ओवर में कर चुका है। इस ओवर में कुल मिलाकर रन बने 6, और एक वक्त रनों के लिए कड़ा संघर्ष कर रहे थे टॉर्पेडोज खाना के बल्लेबाज, लेकिन उसके बाद अश्विन और सिनान और शफीक ने बेहतर पारी खेली यहाँ पर, रन्स बटोरे सिंगल्स, और ज्यादातर रन्स बटोरे सिंगल्स के रूप में, और फलस्वरूप इस वक्त एक चुनौती भरा स्कोर खड़ा करने की ओर बढ़ता हुआ टॉर्पेडोज खाना 38 रन जोड़ चुका 6 विकेट के नुकसान पर। अंतिम ओवर उनकी पारी का यहाँ पर शुरू होता हुआ, हमसे दूर वाले छोर से यानी सुरेश बी एन एंड की ओर से निजाम इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए, और स्ट्राइक इस वक्त लेने के लिए तैयार रिलवान, फील्डिंग में जमावट यहाँ पर चलते हुए। द फर्स्ट सेशन of the grand finale of Sauhardha Trophy 2023 is now progressing here, और फील्डिंग में इस वक्त जमावट करते हुए रिलवान सामना करते हुए, इस वक्त ओवर की पहली गेंद गेंदबाज की, ये गेंद ऑफ स्टंप पर आती हुई विकेट कीपर चूके, और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का, कुछ ज्यादा हद तक ऑफ स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रही थी, और अंपायर हालांकि बल्लेबाज ने मांग जरूर की, लेकिन अंपायर इस वक्त रोलैंड पिंटो ने कहा कि जी नहीं, गेंद कुछ ज्यादा हद तक ऑफ स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रही है, वाइड का इशारा, और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 39 रनों पर, 39 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट। एक बार फिर से ये गेंद, इस बार गेंद को उछालना चाहा, फील्डर काफी पीछे, लॉन्ग ऑन पर एकमात्र रन मिलेगा, दौड़कर आए तेजी के साथ फील्डर, मिड ऑन की दिशा में गेंद को फील्ड किया, 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 40 रनों पर। तो गेंदबाज इस वक्त निजाम 2 बेहतर गेंदें इस ओवर में फेंक चुके, अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार, दाहिने हाथ
के बल्लेबाज इस वक्त सामना करते हुए ये गेंद इस बार गेंद को खूबसूरती के साथ स्कूप किया है, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में 1 रन मिलेगा, दूसरे रन के लिए दौड़ पर थ्रो पहुंचा और इस बार बल्लेबाज बच नहीं पाए। बेहतर थ्रो स्ट्रेट ओवर द स्टंप्स और गेंदबाज ने अपना काम तमाम किया थ्रो को रिसीव करने के बाद। 7वां विकेट गिर चुका है, 41 for 7। हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले। देखिए किस तरीके से थ्रो आया था स्ट्रेट ओवर द स्टंप्स और गेंदबाज को कोई दिक्कत ही नहीं हुई यहाँ पर उन्हें रन आउट करने में। इट्स 41 for 7। 3 गेंदें बाकी और नए बल्लेबाज का आगमन यहां पर होता हुआ। New batsman is now comes out to the middle for Torpedo-Skana. 3 गेंदें हो चुकी है इस ओवर में और इस बीच गेंदबाज निजाम अपने ओर की अगली गेंद लेकर तैयार था। तो बड़ा विकेट इस बार गेंद को खूबसूरती के साथ निकाला है, मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। ऑफ द टॉस गेंद को स्कूप किया था इस वक्त लंगोन और मिड विकेट के बीच में और गैप इस वक्त चुनते हुए। हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले। देखिए किस तरीके से हेलीकॉप्टर शॉट की बदौलत गेंद इस वक्त सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। फैंटास्टिक स्ट्राइक केम फ्रॉम द न्यू बैट्समैन रिलवान। इनफैक्ट बैट्समैन नए बल्लेबाज इस वक्त नॉन स्ट्राइक एंड पर मौजूद था। रिलवान का स्ट्रोक बेहतर था, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। बल्ले को पूरी तरह हवा में घुमाते हुए उन्होंने गेंद को इस वक्त स्विंग कर दिया ऑफ द टोज और चौका इस वक्त प्राप्त करते हुए। इट्स 45 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट, 2 बॉल्स लेफ्ट इन द इनिंग्स और गेंदबाज निजाम इस वक्त गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद इस बार एक बार फिर से स्ट्रोक दोहराने का प्रयास, विकेट कीपर चुके नॉन स्ट्राइकर पर खतरा इस बीच और यहां पर ऐसा देखना पड़ेगा ये विकेट गिर चुका है। विकेट नंबर 8 गिर चुका है। तेजी के साथ रन के लिए दौड़ पड़े थे, नहीं पहुंच पाए नॉन स्ट्राइकर एंड पर। देखिए यहां पर विकेट कीपर तेजी के साथ गेंद पर झपकते हुए थ्रो किया और थ्रो को रिसीव करने के बाद गेंदबाज ने विकेट यहां पर चटका दिया। अंतिम गेंद बाकी और बल्लेबाज नए बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए। 45 for 8। मुबिन इस वक्त नॉन स्ट्राइकर एंड पर मौजूद है और जहां तक सवाल है स्ट्राइक का तो स्ट्राइक इस वक्त लेने के लिए तैयार है शरण और निजाम उनकी पारी की अंतिम गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट। द लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप। निजाम टू शरण, ये गेंद स्वीप किया, टॉप एज गेंद पहुंची इस वक्त स्क्वायर लेग पर और वहां पर संतोष ने कैच को लपक लिया है। तो इसी के साथ टोर्पेडो-स्काना फिनिश्ड विद द 45 for the loss of 9 wicket in the stipulated 8 overs, and now the target for Red Wings Kunjat Bail is 46. They have to score for victory to clinch the prestigious Sauhardha Trophy 2023, and as far as the required run rate is concerned, exactly 5.75 runs per over they have to score for victory. With the help of 10 wickets, the present equation shows for them 46 they have to score. और देखते हैं वो इस लक्ष्य तक यहाँ पर पहुँच पाते हैं। लेकिन एक बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन रेड विंग्स कुंजत बैल के गेंदबाजों ने दिया और टॉस जीतने के बाद उनके कप्तान ने जो फील्डिंग करने का निर्णय लिया था उस निर्धार का संपूर्ण समर्थन करते हुए गेंदबाजी किया और टोर्पेडो-स्काना के सशक्त बल्लेबाजी के लाइनअप को सिर्फ 45 रनों पर रोक कर रखा है। अब काम है उनके बल्लेबाजों का और देखते हैं उनके बल्लेबाज किस तरीके की बल्लेबाजी की रणनीति टैक्टिक्स यहां पर अपनाते इन 46 रनों के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। तो इस श्रृंखला में फॉर द लास्ट टाइम इन दिस टूर्नामेंट अंतिम बार मैं मेरे काबिल दोस्त सतीश को बुलाना चाहूंगा। तो सतीश यहां पर 46 रनों का लक्ष्य अगेंस्ट द स्ट्रांग बॉलिंग लाइनअप इस वक्त उन्हें बनाना है 46 रन। रेड विंग कुंजत बैल को बनाने हैं और जहां तक टोर्पेडो-स्काना का सवाल है सशक्त गेंदबाजी का लाइनअप है और अगेंस्ट द स्ट्रांग बॉलिंग लाइनअप इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए 46 रन बनाने के लिए एक बेहतर शुरुआत उन्हें यहाँ पर करनी होगी। तो जो भी हो यहाँ पर इस श्रृंखला के इस प्रतिष्ठित सौहार्द ट्रॉफी 2023 के फाइनल सेशन अंतिम श्रृंखला में हम उम्मीद अपेक्षा करते हैं कि एक बेहतरीन क्रिकेट एक रोचक क्रिकेट हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा और इस श्रृंखला के अंतिम पारी में क्लाइमैक्स पर विजय जो भी हो क्रिकेट हमेशा विजय रहेगा। और इस उम्मीद अपेक्षा के साथ माइक्रोफोन पर अब मैं आपको अंतिम बार फॉर द लास्ट टाइम इन दिस टूर्नामेंट आमंत्रित करना चाहता हूं। आइए सतीश, धन्यवाद, थैंक यू।
Well, thank you very much, Gopi. Welcome back for the chasing, the second session of the mega final of this prestigious Sauhardha Trophy 2023. All now, we are everyone's eyes into the Red Wings batters. How well they will going to get this 46 runs to become the champion of this prestigious Sauhardha Trophy 2023. And wait and see how well Torpedoes Khana will going to restrict the opposition to become the champion of this Sauhardha Trophy 2023. For that, you need to wait for another more than half an hour. You will going to get the result of this mega final. But I think in this particular condition, I think after Red Wings Kunjat Bail captain won the toss, selected to ball first, I think the bowler did a great job. It's not an easy job to restrict the opposition top batting department of Torpedoes Khana for 45 runs. I think the bowlers did a great job. Now all up to the batters of Red Wings Kunjat Bail to justify their effort. Need to justify the effort of their bowlers. It's by getting that 46 runs so that they can become the champion. They can make a big upset in the mega final if they bat well, if they bat sensibly. But I think Torpedoes Khana, they certainly will not going to give up this very easily, because they got some good bowling department, and against the bowling department, good bowling department, I think Red Wings Kunjat Bail have to bat very well. So altogether, this match is going to be anybody's game. And Sharan will go into start the proceedings, and in front of him is Tanzim will go into face his first delivery, and Kishore is a hero of the previous match. He is in non-strikers, and Sharan. First ball, Tanzim hit that one pretty hard into the ground. Not quite intended cricketing stroke. He wanted to drive that one hardly down to deep, down to long off region, but he's just got a mistiming that one, so that he managed to get a single down to deep long on. So he got his first run, and Red Wings Kunjat Bail, they started their journey, and the first ball itself, Tanzim is off the mark, and his team has also got their first run. Now still it's got 46 runs to win the match in this mega final in a stipulated 8 overs, and in this condition his goal is going to be absolutely, and something is going on here. Maybe Ashwin looks like he's going to leave the field. And looks like I think for this mega final we have chief guest Ashraf, and he is an ex-corporator as well as ex-mayor of Mangalore City Corporation. So on behalf of organizers, on behalf of all cricketer lovers, we'd like to welcome Ashraf for this post-match presentation ceremony of this prestigious Sauhardha Trophy 2023. ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಹಾಗೂ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರ ಆದಂತಹ ಅಶ್ರಫ್ ಇವರಿಗೆ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸೌಹಾರ್ದ ಟ್ರೋಫಿ 2023 ಈ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಿದ್ದೇವೆ.
So now Sharan will go into continue. Right arm around the wicket. Sharan to the right hand batter. This time again nicely place it down to the square leg region for a single. With that single, the batter Kishore is off the mark to lose score numbers under 2 on the board without loss of any wicket in the over number. First is in progress. So new bat, of course, the opening batters out there in the middle. And Sharan is searching for the wicket, so far, Sharan bowled a good one, and right arm over the wicket. This time wanted to swing that one, but missed it completely. But have a look at the collection there from Ashraf behind the stump. He's been outstanding behind the stump. Once again, in a fraction, he completes the job. Have a look at that one in a replay. Right arm over the wicket, slight a bit of outside the line of off stump, and in a fraction of second, just in a blink of eyes, he completes the job. And there is no chance at all for any damage, but dotted delivery, much required dotted delivery. So 46, which is going to be a target here for team Red Wings Kunjat Bail to win this match, and they wanted to get a very good start here, just like what did in the previous match against Zaman Boys Kalarka. The same thing they wanted to continue here. This time again he wanted to drive that one on the onside region, misses it completely. And one more very good delivery there from Sharan. Sharan is going to be very impressive throughout the tournament, but because of being the fact that he's coming in power play overs, it's always going to be a difficult job for any bowler to keep the batsman quiet. But so far he did a great job to keep the batsman quiet here. Tanzim is on strike. This time he wanted to get the expensive reverse stroke, but not really get past that fielder there. So he got a single in the negation with a single. Score numbers under 3 on the board. 3 without loss of any wicket. Now just changing his angle. He wanted to coming around the wicket because left-hand batsman Kishore is on strike. Kishore has played a good innings in the previous match, scored a 20 plus runs. And now he's wanted to play one more big role here for Red Wings if they wanted to win the match. This time he wanted to get that one very fine. Again that Ashraf misses the opportunity, because the opportunity is created for the run out in a non-strikers end, but a slight bit of urgency shown by Ashraf. The ball which is slipped out of his hand while he was trying for throwing the ball. Have a look at that one. Ball just slipped out of his hand. Otherwise, a certain chance of run out in the non-strikers end. Leg by called by umpire. One more addition. 4 on the board after completion of over number first. Chasing 46 to win the match to become the champion of this prestigious Sauhardha Trophy 2023, which is organized by, of course, under the support of Gori Young Boys, and Alfaz is the one is leading from the front, and with the support of all the donors. So far this tournament is absolutely one of the most successful cricket tournament in this UCG cricket ground. Lots of underarm cricket, and we are just an hour which is left to see that which team will go in to lift this prestigious Sauhardha Trophy 2023. And this tournament is organized with the sweet memory of late Suresh Bian, one of the most unforgettable personality, who has contributed a lot for the success of Gori Young Boys. So second over going to start from the far end. Mubir brought into attack to bowl that second over. This time ball misses the wicket keeper. Even Imtiaz a little bit fumbled, but just a single here. And with that single, score Namuzan to 5 on the board by call by umpire. The wicket keeper behind the stump misses that one completely. Sometimes it's very difficult for the wicket keeper to sight the ball when batsmen have shuffled across the line off the delivery. The Mubir is also very, very outstanding to the tournament from his bowling. He is also coming in a difficult condition when you need to bowl in the power play overs, especially when he bowled brilliantly against NM Cricketers Mangalore and against KCCR Kadri registered. This time again you're going for the expansive drive. Tanzim slight a bit of struggling here, and one more dotted delivery. Each and every dot ball the Torpedoes Khan will going to enjoy here, because they wanted to take this asking run rate more than 6.
and each hour after they wanted to larger the distance between run and ball. Again, wide call by umpire. This is the one area where Mobile need to be very, very careful. Conceding extra runs means you are giving extra confidence for the batter. Looks like the wicketkeeper behind the Delhi batsman Tanzim having a slight a bit of problem in his leg. Might be that hamstring injury because of dehydration is always going to one of the common thing is happening in the cricket field for the players because of that, especially the condition, the hot condition. The month of April is May absolutely is going to be very horrible for the player. It's not so easy. Looks like even Red Wings were there taking part in the tournament, Adinatheshwar Trophy as well. So that's today they played a plenty of cricket, and even day before yesterday also they played a cricket here in this first and second day of this cricket tournament. So that means it's always going to be a challenge here for all the players, especially in this particular season. I think more crickets. There is a busy schedules. Not only the players have to play in the Saturday and Sunday, but even in the weekdays there is a regular cricketers everywhere. And one of the busy schedule I want to say in this particular season 2022-23. And but I think it's not going to be a big problem when you're playing in the month of till month of February. But once you are entering in the month of March, April, May, the 3 months is always going to be a challenge for all the players to handle that condition and keeping your fitness level, and definitely going to be a big problem for the players. Umpire just a little bit. The previous delivery. Previous delivery, which is a wide one. So it's a 6 on the board. 6. Yes, thank you. 6 without loss of any wicket. Mobile right arm over wicket bounce. Outside the run of time. Fantastic one. The good comeback here by the bowler. After that, he bowled us outside the leg stump too much. Again, lovely delivery. Again, Tanzim slight a bit of struggling here because of the hamstring injury, and muscles catch absolutely making it a little bit harder for the batsman to get a footwork proper. The front foot was very hard, very difficult to move. Then it's very difficult for you to play the stroke, but especially against the face of Mobir, which is the ball which is coming very quickly to the batter. This time they appeal for leg before he gets chance of run out. Oh, he's just waiting. I don't know for whom he's waiting for that. Absolutely. First attempt he's not trying. Second attempt he just wanted to hit the stump. Sinan in the negation, but ball misses the stump and batsman survive. At 7 without loss of any wicket. Just a two mind here from Sinan. The first he doesn't take a little bit time to shy the stumps. But Kishore is very lucky that he got saved from that throw. Otherwise, it's going to be a disaster end for Kishore. 7 without loss of any wicket. Again, Mobile bowling from the far end. Right arm bounce.
Again, Kishore wanted to get that one very fine. Again, he fails to make a contact with the batter. And one more good over which is completed. After completion of fantastic 2 overs, both the opening batters might be able to save their wicket, but I think they fails to get the 100 what they really wanted. Just a 7 on the board. Just you want to go to that required run. 39 more runs required for the victory in remaining 6 overs. 36 ball, 38 runs required for the victory. Now, first time that asking run rate, which is going more than 6 runs per over. The 6.17 runs per over is going to be asking run rate. Rilwan brought into attack here. The match is even deployed. It is going to be anybody's game. But I think Torpedoes got a very good 2 overs. The same kind of start. But I think in that Torpedoes innings, they lost 2 wickets too early. And here is Team Red Wings. They didn't lose wicket, but the runs pitch is not good enough. But I think the 6 overs still there remaining in the innings, they can make up. They can come back because not a huge difference between bat and ball. But they doesn't want to take that one larger. They need to keep the eye on the required 100 every time. Now, Rilwan. Again, Tanzim looking for the expansive drive. Ashraf trying for the run out and missed the stump. Again, Ashraf is always is a very good wicket keeper, no doubt at all. But sometimes it's a difficult condition to keep the wicket. But it is going to be frustration for the bowler when the wicket keeper is not anticipating very well behind the stumps. 8 on the board without loss of any wicket. But here is the batter doesn't want to miss that single opportunity here to cross over. But I think that both the batsmen are not really playing with it confidently so far, as they're trying for the drives, trying for the sweep shot. But by everything is not looks like they are very comfortable in the middle. As Rel won again. This time, what we're talking about, one of the first confident looking stroke came from the bat of Kishore, but the placement is not good enough to get the boundary. But even well fielded by the fielder at deep square leg. Shaif, I think, is the fielder there in the deep square leg region. He fields the ball and returns the ball. Just a single. 9 on the board without loss of any wicket. Rilwan. Right arm over wicket. Balls, nothing much to do with the delivery. He's left that one rightly so. Wide call by umpire. These all runs are the bonus run here for the team Red Wings. They will go to enjoy that one. 10 on the board. That means they have to get another 36 runs to win this match. Absolutely fantastic mega final is in progress. It's going to be anybody's game. Both the team has got opportunity to win this match. This time, Saptan on very fine, down to define the boundary. It is going to be win the race. Yes, ball does win the race against the fielder. This is a welcome boundary for Red Wings. Kunjat Bhai. Now have a look at the dugout. Have a look at the dugout of Red Wings. They are live now. So absolutely fantastic placement here from Tanzim. So 14 without loss of one wicket. And that will give a lot of confidence for these two batters out there in the middle, that boundary. But for that they need to wait for the third over to get their first boundary. This time again he wanted to repeat that one. But here is, I think, the ball is really missing his bat and pad and hitting his stump. The wicket number first is back into pavilion. Tanzim is back into pavilion. But Rilwan doesn't know anything about that. He still is going asking for the umpire to give the leg before wicket. But ball which is really missing everything and hitting the stumps. Have a look at that one. Ball just passing between his legs and hits the stumps. And the batter is back into pavilion. So good comeback from the bowler's point of view. And at last Torpedoes has got a wicket here. In a right time when Tanzim looks so confident after he got a boundary. He is back into pavilion. It's 14 for the loss of one wicket. Santosh, his experienced campaigner, just came into middle. What a player he's been. Absolutely fantastic cricketer.
Now I think he need to convert his experience into performance, because Red Wings has got a good start, even though they lost the wicket, but I think the match is definitely going to be very interesting here. Round the wicket balls. This time swept it on. Imtiaz diving effort, but there is a fielder in the fine leg region. In fact, will going to cut it off. Once it looks like the Imtiaz is diving effort, misses his hands. Looks to be going to be one more boundary, but fielder is this time after that boundary is standing very fine, not in the square leg, but between fine leg and square leg, so that he managed to cut it off. 15 for the loss of 1 wicket. Rilwan. Slight a bit of, looks like Ashwin is not 100% fit here. Is feeling absolutely. Once he left the field at the start of the innings, but once again he entered the ground. I think if you are not feeling 100% fit, I think it's going to be asking for trouble. You need not to do that. This is I really would like to see that Kishore Ranna of Red Wings is just helping the opposition teams. Even of course we are only opposition in the field, but hardly we are all the same. We are the human beings, and just he is himself is helping to take Ashwin safely. That looks like it might be the dehydration. It's nothing much like that. Nothing much worry about that, because dehydration is definitely going to be a big problem. And if you are having a less sleep, if you are not having a sound sleep, then playing continuously in the day and night, it's not so easy. And that's a big problem here for Torpedoes Kana, is that and even Ashwini knows that how important that it's a 2 overs. So looks like Ashwin once again is back. So Ashwin is back. Maybe they're thinking about that 2 hours, and he wanted to not miss that opportunity, because how important is going to be a 2 hour of Ashwin, especially under floodlight and his big final. Here is again bowler balls. Rilwan. This time delicately plays, and Ashwin charging to that one, and again one more single has been taken. 16 on the board for the loss of 1 wicket in the over number 3 completed. So now just coming back to the equation, I think 30 balls remaining. They have to get another 30 runs with this match. 30 runs required for the victory. Match is evenly poised. It's going to be anybody's game. So 16 for the loss of 1 wicket. The match is evenly poised. 30 balls remaining and 30 runs required for the victory. Now this is going to be very important over.
especially for Tarpurus Khan. He knows that Zamobir is bowling his last over of his spell, and they wanted to get the wicket here. But this time Kishore is so good in this situation. Whenever the team is required runs for each and every ball, the Kishore is such a good player to handle the pressure. He picked up a single, 17 for the loss of 1 wicket. Now Santosh came into bat, and Nandan Kulshekar, one of the fan of Santosh, is announcing 500 rupees for Santosh Pujari Kodekal. If he is able to get 160, he will going to get a 500 rupees. That only for Santosh from Nandan Kulshekar. 17 for the loss of 1 wicket. But Santosh knows that more than the 6 is that this kind of cricketing stroke is much required here. And he knows that the condition of the game is not like that he wanted to get a big shot. But this kind of intelligent cricket is much required for end wings Kunjat Bail. It's 18 for the loss of 1 wicket. The match is definitely going to be more interesting here. Mubir, both the teams has got opportunity to win the match. Again, delicately plays it down to third man region, but the protection is given for him, especially for the Kishore. The opposition team knows that he is very strong behind the wicket and square of the wicket, so that they kept the 2 fielders behind. One at the fine leg, one at deep third man. So 19 for the loss of 1 wicket. 3 balls, 3 singles has been taken. They're playing as per the condition required. Mubir. Boss, this ball is in there, but out of the reach of Imtiaz down at short fine leg region. By call by umpire. Ball misses the bat. So the wicket keeper misses it. So that one more single has been added to total. 20 for the loss of 1 wicket. 26 required from 26 deliveries. Absolutely fantastic final. The kind of final what the spectator want to see. The final, the kind of final what the viewers wanted to see. This time is very fine. But again, Imtiaz is looking so good in the behind the wicket. This time I think Kishore is trying to get one very fine. Of course, he got a bat onto that, but fails to defeat the fielder. One more single. 21. Now 25 required from 25 balls. Both the batsmen are playing absolutely sensible cricket. But Mubi suddenly wanted to get one total delivery at least in this over, so that they can put some pressure if the asking rate is just going over 6 runs per over. But I think Red Wings, after getting such a good position, they doesn't want to lose the momentum what they got here against Torpedoes Kana. Last time in this over, right now over the wicket bounce. This time Santosh, absolutely perfect cricket. Absolutely perfect cricket from these two batters. 6 runs came from that over. So after completion of over number 4, chasing 46 to become the champion. Equal battle is on. 22 runs which is scored. That means another 24 runs required for the victory. And remaining 4 overs. Now Ashwin straight away came in to get the ball to ball. But umpire is saying that it's not possible. How many overs you are left the crease, and you need to be there in the field that time you are left in the dugout. That's what the rules and regulation is saying here. But now I think umpire having some conversation with Roland Pinto and Aresh Padil, now saying that the time which is given is absolutely right time for Ashwin to come to ball, and now we're going to ball. And Gopi, the perfect time for you to call in the mic, because Ashwin definitely is a perfect bowler to come and bowl, but I think is for you to perfect time to come and have the mic at the final time in this fantastic cricket tournament. And match is evenly poised, Gopi. And this is going to be very crucial over, isn't it? Ashwin looks like not 100% fit. Several times, 2 to 3 times, he went outside and came in. But that's the seriousness of cricket, Gopi. How important that 2 hours is going to be Ashwin's, and this is going to be a very crucial over for both the team. एब्सोल्युटली सतीश, जैसा कि आपने फरमाया इस वक्त ये ओवर दोनों टीमों के लिए क्रूशल ओवर है और यहाँ पर सेंसिबल बल्लेबाजी जो अपनाते हुए क्रीज पर मौजूद दोनों बल्लेबाज किशोर और संतोष, ये गेंद पहली गेंद थी इस वक्त संतोष के लिए, गेंद को इस वक्त स्टीयर कर दिया खूबसूरती के साथ शॉर्ट थर्ड मैन पर 1 रन के लिए, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 23 रनों पर। एब्सोल्युटली जैसा कि बिल्कुल सही बात आपने कहा सतीश, इस वक्त मैच बराबर पर रुक चुका है और यहाँ पर देखना यह है कि ये दोनों बल्लेबाज अश्विन को किस तरह यहाँ पर टैकल करते हैं।
तो यहाँ पर किशोर एक बेहतर बल्लेबाजी का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए ये गेंद अश्विन की गेंद अंदर की ओर आती हुई गेंद इस वक्त अपील पिच्ड आउटसाइड द लाइन एट द लास्ट मोमेंट और हालांकि बेहतर लेग कटर गेंद थी अंदर की ओर आती हुई लेकिन गेंद लाइन के बाहर टिप्पा खाती हुई और राउंड द विकेट गेंद इस वक्त फेंकी गई थी और इस बार रन बल्लेबाज को मिला एक। तो एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 24 रनों पर। इट्स 24 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद ये गेंद स्विंग करना चाहा विकेट कीपर के हाथों में डॉट गेंद यहाँ पर डॉट गेंद हो चुकी है और 3 गेंदें 2 रन इस ओवर में बन चुके हैं। अब रन से चाहिए 22 गेंदें बाकी हैं 21 21 balls to go 22 runs more now they have to score for victory. Still the equal battle is now on. What a fantastic grand finale of Sauhardha Trophy 2023 is now progressing here. Driven through the covers. This time he's got a single. In fact, they're looking for the second. In comes the throw into the hands of wicketkeeper. And at last, he's got a single for the stroke. और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 25 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर 25 for the loss of 1 wicket. किशोर इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। अश्विन की गेंदों का दाहिने हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद इस वक्त किशोर के लिए गेंद को मोड़ना चाहा चुके डॉट गेंद 2 dot deliveries in the 5 deliveries of this over and this is turning out to be a good over. और अश्विन अपनी क्षमता एबिलिटी के अनुसार यहाँ पर गेंदबाजी करते हैं। हालांकि काफ़ी थके मांदे यहाँ पर नजर आते हुए लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा विश्राम लेने के बाद वापस लौट चुके और अपनी काबिलियत के अनुसार इस वक्त गेंदबाजी करते हुए गेंद इस बार टॉप स्कूप करना चाहा बेहतरीन गेंदबाजी जस्ट 3 runs in this over and now 21 required and 18 balls remaining and the required run rate is now gone up to exactly 7 runs per over. और सतीश निस्संदेह एक थोड़ा सा विश्राम जो अश्विन ने लिया था और वो विश्राम उनके लिए काफी राहत प्राप्त कर चुका है और यहाँ पर वापसी करने के बाद एक बेहतरीन कमबैक को करते हुए सिर्फ 3 रन इस ओवर में प्रदान कर चुके हैं। अब इस ओवर की बदौलत तक कुछ हद तक जस्ट लिटिल बिट तख्ता यहाँ पर टॉर्पेडोज खाना का भारी लगता हुआ लेकिन यहाँ पर एक बेहतर ओवर अगर इस ओवर में कम से कम 8 से 9 रन कुंजत बेल रेड विंग्स कुंजत बेल बनाते हैं तो इस मैच में फिर से एक बार बराबरी आ सकती है। फिलहाल ऐसा कहना पड़ेगा 3 ओवर काफी निर्णायक दोनों टीमों के लिए। Well, exactly, Gopi. This is what you call the fighter. There's a real fighter, isn't it? Even though he knows that he's not 100% fit here, but he knows that his 2 overs is definitely is required for his team. That's why he would just after taking a slight bit of rest, even though he's not thinking that he's not that much of 100% fit, but the condition forcing him to come and bowl brilliantly. And a fantastic over, Gopi. And because of that, now the things little bit looks like harder for Red Wings. But Gopi, still I think the team Red Wings has definitely there in a driver's seat of winning this match because they lost only 1 wicket and one batsman can take an initiative of getting some big shot, then they can come back to this match in the remaining overs. Exactly, सतीश। यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। तो इस वक्त गेंदबाज तैयार दाहिने हाथ ओवर द विकेट पहली गेंद लेकर जस्ट गॉन फॉर अ वाइड स्विंग। इस बार चूंकि गेंद पहुंची है थर्ड मैन पर संतोष ने पहले देखा नहीं कि गेंद कहां पर गई है लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि गेंद थर्ड मैन पर पहुंच चुकी है शॉर्ट थर्ड मैन पर 1 रन के लिए दौड़ पड़े। और निस्संदेह सतीश बिल्कुल सही बात आपने कहा इस वक्त हालात जो कि मजबूर किया कि अश्विन वापस मैदान पर आए और अपनी काबिलियत गेंदबाजी के जरिए यहां पर दिखाए और अपनी काबिलियत उन्होंने दिखाई पिछले ओवर में 3 रन प्रदान करते हैं सिर्फ। लेकिन रेड विंग्स के लिए इस वक्त 3 का फासला है बचे हुए गेंदे और बनाने रन्स के बीच। तो इन 3 के फासले को मिटाना कुछ ज्यादा उनके लिए मुश्किल नहीं है। एक बेहतर स्ट्रोक उनको बराबरी पर ला सकता है। गेंदबाज इस वक्त तैयार दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस वक्त गेंद को सीधा लंबा पर फील्डर गेंद के नीचे आते हुए और इस बार ये कैच लपक चुके हैं। किशोर इज नाउ बैक इनटू पवेलियन। He just played that one inside out cricket, lofted that one square of the wicket, but ऐसा कहना पड़ेगा गेंद में इतना पर्याप्त दम नहीं था कि सीमा रेखा को पार कर सके। देखिए किस तरीके से गेंद को उछाला था। Have a look at this in the replay। और आखिरकार लॉन्ग ऑफ फील्डर ने कोई गलती नहीं की। तो किशोर की कुछ हद तक स्ट्रगलिंग पारी पर पर्दा गिर चुका है और किशोर का विकेट का पतन अब ऐसा कहना पड़ेगा सतीश कुछ हद तक रेड विंग्स को जद बेल के लिए ड्रॉबैक यहां पर साबित हो सकता है। Well, Gopi, just look at the dead dismissal. Maybe the batter is played a little bit squarer
if he try to get that one in the straight version, definitely he will going to get the distance, because not only if he fails to get the distance, he can get the boundary for that, Gopi, because no one there in the deep long off region. The long off is a little bit squarer, and that's what the big problem here for Kishore, that he fails to get the distance. But I think Torpedoes Khana got a huge wicket here, and especially in the previous over, Ashwin's over, I think Kishore slight a bit of struggled, but I think he's definitely going to be the kind of batter who can made a bounce back. But losing him in this condition makes Red Wings a slight a bit of drawback in this condition, Gopi. बिल्कुल सतीश, लेकिन ड्रॉबैक थोड़ा सा है और बाउंस बैक करने का मौका जरूर है इस वक्त उनके लिए। 16 गेंदें बाकी, 20 रन चाहिए और रिलवान इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए नए बल्लेबाज, एक और बेहतर बल्लेबाज सफ़ान का आगमन यहाँ पर हो चुका है और देखते हैं यहाँ पर सफ़ान अपने टीम के लिए क्या करते हैं। तो इस बीच गेंदबाज इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार और इस बीच ये गेंद, इस बार गेंद को सफ़ान ने गेंद को उछाला, लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद जाते हुए फील्डर गेंद के नीचे आते हुए इस बार गेंद को फील्ड करने में सफल, दूसरे के लिए बल्लेबाज दौड़ पर 2 रन पूर्ण कर चुके हैं। कपल ऑफ रन्स एडेड टू द टोटल। बेहतर तरीके से गेंद को इस वक्त उछाला था गेंदबाज की दाईं ओर से, देखिए किस तरीके से इनटू द गैप एज वेल, और जब तक गेंद को सीमा रेखा के अंदर फील्डर गेंद को रोक कर फील्ड करके थ्रो करे, बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का, शायद अकरम वहां पर फील्डर थे और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका 2 रन प्राप्त करने का और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 28 रनों पर। 18 रन चाहिए, गेंदें बाकी है 15। व्हाट अ मैच, व्हाट अ फैंटास्टिक मैच इज नाउ प्रोग्रेसिंग हियर। 28 रन 2 विकेट के नुकसान पर और 18 रन इस वक्त चाहिए 15 गेंदों पर। गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए अपनी अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद इस वक्त गेंद को उछालना चाहा, बेहतर तरीके की विकेट कीपिंग, लेकिन इस वक्त अंपायर ने कहा कि जी नहीं, बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद है। बेहतर तरीके की गेंदबाजी, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक डिलीवरी फ्रॉम रिलवान। तो इस वक्त 14 गेंदें बाकी है, 18 रन चाहिए विजय के लिए और निस्संदेह यहाँ पर कांटे का टक्कर जारी दोनों टीमों के बीच। Absolutely fantastic final match is now progressing at the grand finale of a prestigious cricket tournament, Sauhardha Trophy 2023, which proudly organized by under the great leadership of Mr. Alfaz with in association with Gori Boys in the memory of late Suresh BN। और यहाँ पर सवाल है इस वक्त अगली गेंद का। रिलवान दाहिने हाथ ओवर द विकेट अपनी ओवर की 5वीं गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस वक्त हल्के से गेंद को पुश करना चाहा, गेंद पहुंची इस वक्त शॉर्ट पॉइंट की दिशा में, 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 29 रनों पर। 29 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट एंड 17 टू गेट, 13 बॉल्स टू गो। और दर्शक देर रात 11:30 बजने के बावजूद इस वक्त मैदान पर लगभग भर चुके हैं और निस्संदेह तो यह बात यह दर्शाता है कि अंडराम क्रिकेट, लॉर्ड्स ऑफ क्रिकेट, उर्वा क्रिकेट मैदान पर कितनी जनप्रियता रखता है। इस ओवर में अंतिम बार संतोष इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। रिलवान दाहिना हाथ ओवर द विकेट, यह गेंद इस बार संतोष के लिए, पहले स्वीप किया गेंद जाती हुई इस वक्त डीप स्क्वायर की दिशा में, क्लीन कलेक्शन, नॉट मोर देन अ सिंगल और 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज यहां पर संतुष्ट हो चुके हैं। 30 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट एंड ओवर नंबर 6 हैज बीन कंप्लीटेड, 16 टू गेट फ्रॉम 12 डिलीवरीज। मैं समझता हूं सतीश अंतिम 2 ओवर में अश्विन और रिलवान ने जिस तरीके की गेंदबाजी की है काबिल तारीफ है। 24 गेंदों पर 24 रन बनाने थे। जब माइक अपने मेरे हवाले सौंपा था तो उसके बाद 2 ओवर में बने हैं सिर्फ 8 रन, 3 रन अश्विन ने प्रदान किए, 5 रन रिलवान ने प्रदान किया और इन दो ओवरों की बदौलत अब कुछ हद तक तख्ता यहाँ पर भारी लगता हुआ टॉर्पेडोस खाना का और कुछ हद तक वो इस मैच में वापस आ चुका है। Well, Gopi, absolutely right, because 24 runs and 24 deliveries remain, isn't it? After that, the 2 overs certainly is going to be a Torpedoes Khana. Really tighten up the screws and they make the difference into 4 between run and ball. That 4 difference is definitely going to need to bring immediately. But the question raising against Ashwin is bowling his second over, and it's going to be a fantastic one to see which who will going to win the race. But बिल्कुल सतीश, पहले गेंद इस बार लेग स्टंप से कुछ ज्यादा बाहर की ओर नहीं निकलती हुई, अब ऐसा कहना पड़ेगा दबाव बल्लेबाज के ऊपर बढ़ चुका है और बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन यहां पर जारी रखते हुए गेंदबाज अब दे हैव टू ब्रेक द शैकल्स, इस वक्त बंधनों को उन्हें तोड़ना होगा और देखते हैं यहां पर बंधनों को किस तरह बल्लेबाज तोड़ पाते हैं। अश्विन अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, ये गेंद रिवर्स शॉट, गेंद को खेलना चाहा, पैरों पर गेंद टकराई, गेंद पहुंची स्क्वायर लेग पर, नॉट मोर देन अ सिंगल, 1 रन मिलेगा। 31
leg by declared by umpire और संतोष ऑफ द स्ट्राइक सफान इज नाउ बैक ऑन द स्ट्राइक और स्कोर चाहिए रन चाहिए इस वक्त 15 जबकि गेंदे बाकी है यहाँ पर 10 और फील्डिंग में जमावट यहाँ पर चलती हुई और बैकवर्ड स्क्वायर लेग डीप मिड विकेट लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ इस वक्त मौजूद डीप कवर पॉइंट और सफान इस वक्त सामना करने के लिए तैयार अश्विन अपनी ओर की अगली गेंद दाहिना तो ऊपर विकेट ये गेंद इस बार रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा बाउल्ड आउट हो चुके हैं बाउल्ड आउट और यहां पर सफान का विकेट गिर चुका है just wanted to play that one with a reverse shot not succeeded the ball kept low at the last moment have a look at this in the replay किस तरीके से देखिए गेंद को खेलना चाहा था और आखिरकार गेंद उनके बल्ले को वंचित करती हुई सीधे निकली विकेटों की तरफ और विकेट यहां पर विकेटों पर जाकर टकराते हुए और इसी के साथ विकेट गिर चुका और इस विकेट के पतन के साथ अब ऐसा कहना पड़ेगा कुछ हद तक मुश्किलें और बढ़ चुकी हैं यहां पर रेड विंग्स कुंजत बैल के लिए 9 balls 15 runs required 14 for tie और वैशाख एक और आक्रामक बल्लेबाज और निस्संदेह यहां पर और इस बार अंपायर ने इशारा किया है कि स्टिपुलेटेड टाइम इज नॉट कंप्लीटेड फॉर द फील्डिंग साइड तो एक खिलाड़ी को इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर बुला लिया जाएगा तो अब 4 खिलाड़ी ठीक सीमा रेखा के अंदर मौजूद वैशाख और वैशाख पे वो क्षमता एबिलिटी है कि वो चौका और छक्का इस मोड़ पर लगा सकते हैं दाहिना तो ऊपर द विकेट ये गेंद ऑन साइड पर स्विंग करना चाहा बेहतरीन गेंदबाजी एक और डॉट गेंद वन मोर डॉट डिलीवरी नाउ 9 balls left 15 required और ऐसा कहना पड़ेगा रेड विंग्स के लिए इस वक्त कम से कम एक चौके या छक्के की सख्त जरूरत इस मैच में कम बैक करने के लिए 8 balls remaining and it's 15 runs required so what a fantastic match is now progressing here दोनों टीमों के समर्थक सपोर्टर्स अपने टीम का मनोबल बढ़ाते हुए तालियों के साथ सीटियों के साथ और इस बीच अश्विन दाहिना तो ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए यह गेंद इस बार ऑन साइड पर उछालना चाहा विकेट कीपर चुके शॉट थर्ड फील्डर के हाथों में गेंद बड़ी मुश्किल के साथ गेंद को उन्होंने रोका और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का 32 14 required 7 balls left लास्ट टाइम इन दिस ओवर अब तक एक बेहतरीन ओवर समाप्त हो चुका है अश्विन का अंतिम गेंद उनके कोटे की बाकी और देखना यह है कि अंतिम गेंद में भी क्या वो अपने सफलता के सिलसिले को बरकरार रख पाते हैं गेंदबाजी में या नहीं दाहिने तो ओवर द विकेट संतोष के लिए यह गेंद ऑन साइड पर गेंद को स्विंग करना चाहा बाउल्ड आउट मैजिशियन इज नाउ कम बैक और यहां पर यह विकेट गिर चुका है अब सतीश Red Wings Kunjat Bail needs some miracle batting in the stage in the last over of this tournament और ऐसा कहना पड़ेगा fantastic comeback made by Ashwin after being injury. Absolutely, Gopi, unbelievable. And just like his after he just came into the field, Gopi, just like it's going to be very dangerous that wounded tigers, just like he came as a wounded, like the more hungry. Is more hungry to get the wicket, more hungry to get some dotted deliveries, and once again he's justifying why he's called as a magician as a bowling is concerned. Once again under pressure game, and when his team is required some over which is not only economical over which is required, but wicket taking over which is required, and Ashwin so far did a great job. Absolutely fantastic performance, Gopi. Now 14 to get from 6 ball match, which is not yet over, I want to say, because this man Vaishak is a kind of batsman. The previous, the second round match, once again I want to tell you, one man, when match is completely out of the hands, he just came and delivered on big six. So that I think this man, still this match is alive. If in the first delivery, if you're able to get one big shot, the match is definitely going to be more interesting in this mega final. Exactly, Satish. देखते हैं अंतिम ओवर में क्या होता है. The last over of the tournament is now comes. Right arm over the wicket. Sharan to Vaishak 14 required of last over first ball ये गेंद इस बार वैशाख के लिए गेंद को उछालना चाहा विकेट कीपर पहुंचे थ्रो पहुंचा शरण विकेट इस वक्त बेल छुड़ा चुके हैं तो वैशाख का भी विकेट गिर चुका है और इस विकेट के पतन के साथ अब ऐसा कहना पड़ेगा रेड विंग्स कुंजत बेल की उम्मीदें काफी कम हो चुकी है और निस्संदेह सतीश मैं यहां पर अश्विन की गेंदबाजी का विश्लेषण देखना चाहूंगा 2 ओवर 1 मेडन 2 रन 2 विकेट 2 overs, 1 maiden, 2 runs and 2 wickets. This is an absolutely outstanding comeback in the bowling department from Ashwin after being injury. तो बिल्कुल सही बात आपने
फरमाया सतीश, शेर घायल शेर आम शेर से ज्यादा खतरनाक होता है, और यहाँ पर देखिए घायल शेर मैदान पर एक बार फिर से उतरा और अपना करिश्मा यहाँ पर उन्होंने कर दिखाया, और 2 विकेटें 2 शिकार उन्होंने किए सिर्फ 2 रन प्रदान करते हुए, 1 मेडल रखते हुए अपने 2 ओवर में। और निस्संदेह इस बेहतरीन स्पेल की बदौलत इस वक्त तख्ता काफी हद तक टॉर्पेडोज खाना का भारी लगता हुआ, लेकिन मौका जरूर है। एक चमत्कारी बल्लेबाजी ही अब रेड विंग्स को कुंजत बेल को इस मैच में वापस ला सकती है। 5 balls 14 runs, गेंदबाज तैयार, शरण दाहिने हाथ ओवर द विकेट, द प्रेशर इज नाउ बिल्डिंग अप ऑन बोथ साइड्स, राइट आर्म ओवर द विकेट, हियर वी गो, ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव करना चाहा, चूके दैट्स इट, 1 ball डॉट, 4 of 14. So what a fantastic comeback made by the bowlers of Torpedoes Khana. In the last 20 deliveries, they conceded just 10 runs. 24 of 24 needed, and now 14 needed of just 4 deliveries. This is an absolutely magnificent comeback. तो इस वक्त गेंदबाज तैयार, ये गेंद just gone for a big one, misses, and this time it could be a run out. और इस बार चूके, लेकिन एक रन जरूर मिलेगा। 13 required now from 3 deliveries, और एक बार फिर से अंपायर ने इशारा किया कि एक ज्यादा फील्डर को 20 गज के दायरे के अंदर बुला लिया जाएगा, और अब 3 मात्र खिलाड़ी 20 गज के दायरे के बाहर तैनात, और देखते हैं यहाँ पर क्या होता है अगली गेंद पर। तो फील्डिंग में जमावट यहाँ पर करने के बाद शरण इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लगभग अंतिम अवकाश बल्लेबाज के लिए, ये गेंद इस बार गेंद को छूके, एंड नाउ 2 sixes required, not for victory but for tie in the last 2 deliveries, and this is the last chance in front of the batsmen of Red Wings Kunjat Bail. So fantastic piece of bowling performance continuing here from the bowlers of Torpedoes Khana. 2 sixes required, not for victory but for tie. The last chance in front of the batsmen of Red Wings Kunjat Bail. शरण दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए, यह गेंद इस बार चूके, और गेंद पहुंची शॉर्ट फाइन लेग पर, सिर्फ 1 रन मिलेगा। 34, 12 रिक्वायर्ड ऑफ लास्ट 1 बॉल। सो तो इट्स ऑफ द बैट, और सतीश अंतिम गेंद बचा हुआ है, अगर गेंदबाज कोई नो बॉल या वाइड इस अंतिम गेंद पर ना फेंकते हैं तो निस्संदेह यहाँ पर टॉर्पेडोज खाना चैंपियन होगा इस सौहार्दा ट्रॉफी 2023 का। Well, Gopi, one more crown into the head of Torpedoes Khana in this particular season. And with that, they're back in the game. Absolutely unbelievable. And this is a champion. There you go, the champion of this prestigious Sauhardha Trophy 2023. They defeated Red Wings by the margin of 13 runs and deserved the champion of this prestigious cricket tournament, Sauhardha Trophy 2023, which is proudly organized in association with the Gori Young Boys under the leadership of Alfaz, and absolutely fantastic and successful cricket tournament which is comes to an end. And congratulations for the winner champion, even congratulations for the runner of Red Wings. They really played a good game of cricket. Winning and losing is a part of cricket, but both the teams absolutely played a magnificent final. And the hero of this match, undoubtedly, when Ashwin is just came into middle and came into attack and changing the complexion of the game with a absolutely fantastic bowling performance of 2 overs, 1 maiden, conceded 2 runs and picked up 2 valuable wickets, and that definitely going to be a match winning performance from him. And we are just coming to the first match presentation ceremony. We'll take a break here from our commentary box. Once again, I would like to give special thanks to the organizer being the part of this cricket tournament as a commentator. Myself, Satish Salyan, Mr. Gopi will going to give a special thanks for the organizer. That's it from the commentary box. We are straight away goes into the presentation ceremony. Thank you.
tournament goes to, any guess? So many competitors, but I think the one who are getting more wickets, they will definitely eligible for the best bowler. And best bowler goes to Sustan. Sustan, who got 7 wickets for Red Wings in throughout the tournament, and he is deserved this the best bowler award. May I request Sustan to please come forward. I request Ashraf sir to present this best bowler award for Sustan for his outstanding bowling performance throughout the tournament. Congratulations Sustan. ಕಿಶೋರ್ ಇವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ ಬೈಲ್ ಇದರ ಮಾಲಕರು ಕೂಡ ಈ ತಂಡ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟ ಆಡಿದೆ. ಸೊ ನೌ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್. ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್, ಒನ್ ಹೂ ರಿಯಲಿ played a fantastic game of cricket. Any guess? It's not from the runner-up, it's not from the winner, but a semi-final loser. Any guess? Absolutely, one and only, the man who's destroyed, especially from the bat, absolutely is Rashid Baba of Zaman Boys Kallatka, who's got most of the runs in this tournament, 54 runs in a tournament. So I request Rashid Baba, in his absence, anyone else can come here and collect the beautiful trophy from our chief guest. I request Abu Bakr Ashik to please present Best Batter Award. Best Batter Award. Riaz will going to collect on behalf of Rashid Baba, the best batter. And not only he will going to collect the trophy, but he will going to collect the bat. So congratulations Rashid Baba, not only he got a very good, very beautiful trophy, but along with that he's got a very good bat as well. Congratulations. Now we are coming to the huge one, and the man of the series. The man of the series of Sauhardha Trophy 2023, which is goes to, any guess? The spelling which is start from R. And absolutely, the all-rounders definitely got opportunity because they are contributing from the bat and as well as ball. Absolutely, it's a real one. He's the man of the series. He's got a wicket, highest wicket, as well as he's got some runs in a very important time, and he got a fantastic fielding in the field. And absolutely, it's a good moment, golden moment, because the owner of the team, Shamim, will go and present the man of the series award to Rilwan for his outstanding performance in this tournament. Congratulations for all the individual prize winners. So that's all in the individual department, and we are straight away coming to the big one. Without wasting our time, I request all the players of Red Wings, please come forward. Red Wings ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಡಯಾಸ್ಗೆ ಬರಬೇಕು. ತಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಟಗಾರರಿಗೂ ಕೂಡ 15 ಆಟಗಾರರಿಗೂ ಕೂಡ ಮೆಡಲ್ಸ್ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ವೇದಿಕೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. Absolutely, the captain leading from the front, Yadnesh is leading from the front. He is absolutely a great leader who really takes his team into mega final, and his team becomes a runner-up, and he will go into collect medal. Along with him is part team players. Kishore played a good innings. Vaishak is a very young talented future player. Tazuddin, Tanzim and Santosh, absolutely the good players. They had got Ashwin and Taslim did a great job in the bowling department. So congratulations for the runner-up for your fantastic performance in this tournament.
ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ಅಶ್ವಿನ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಕರ್ಣ ಎದುರುಳ ಕರ್ಣ ಇನ್ನು ಎದುರು ಬೆಲೆ ತಿನ್ನು ತಿನ್ನೇಕಲೆ ತಿನ್ನು ಇದು ಅನ್ನ ಬಂದ ಸೆಟ್ ಒಮ್ಮೆ ಅನ್ನ ಬೇಜಾರ ಒಂದು ನಿಮಿಷ yes. So congratulations. ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೆಟ್ ಒಮ್ಮೆ Now we are before going to the champions. Now it's a time to give a token of gratitude for the officials. Done a great job in this tournament. I request all the umpires please come forward. I request Roland Pittu, Mohan Iyadi, as well as Arish Patil, please come forward. I request Mohan Iyadi, Arish Patil, Roland Pinto sir, please come forward and please collect your token of gratitude for the wonderful job they did in this 3 days of cricket tournament. So Mohan Iyadi, big hand for Mohan Iyadi. ಚಪ್ಪಲೆ ಬರಲೇಬೇಕು. ಮೋಹನ್ ಅಯ್ಯಡಿ ಅವರು 3 ದಿವಸದ ಕಾಲ ಡೇ ನೈಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಮೋಹನ್ ಅಯ್ಯಡಿ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಹರೀಶ್ ಪಟೇಲ್, Roland Pinto is not there. I request one of the best Hindi commentator, my partner for long time and fantastic career. He has got 27 years of experience. I request Mr. Gopi, please come forward. ದಯಮಾಡಿ ಗೋಪಿ ಅವರ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ತಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. So big hand for Gopi. Absolutely a fantastic commentary there from Gopi throughout the tournament. And shukriya Gopi, thank you very much. Absolutely Satish. Exactly, that's exactly. ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರನೂ ಆಗಿರುವಂತಹ ಅದೇ ರೀತಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವೀಕ್ಷಕ ವಿನೋದ ಕೂಡ ಆಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಇವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಮಂಗಳೂರು ಕಂಡಂತಹ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷಾ ವೀಕ್ಷಕ ವಿನೋದ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರನೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸತೀಶ್. ತಟ್ಟ ಇಡ್ತಿತ್ತು ಒಂದು ಅದವರು ಅವಾರ್ಡ್ పోయి ಬೇಗ ಇದಕ್ಕಟ್ಟಿ ಲೈವ್ ಉಂಡಲ್ಲಿ ತಟ್ಟಗಿಟ್ಟೇರಿ Shukriya Gopi, thank you very much for your word of appreciation. Hope we are going to continue for coming days. And now it's time to announce, yes, one more big name. ಅವರ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಳೆದ 3 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಮೂಲಕ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುವ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯರು ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಂಡಂತ ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಕೂಡ, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಬೌಲರ್. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಧು
of Gori young boys. Please come forward. ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ರೇಸ್ ಆಗೋದು ಅವರ ಫೋಟೋವನ್ನು ಯಾರು ತೆಗೆಯುದು ಅಂತ. ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರ ಫೋಟೋವನ್ನು ತೆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಲ್ವ ಅಂತ. ಸೊ ನಾಚು ನರೇಶ್. So thank you very much, Madhu, for your contribution throughout the tournament as a photographer. And Naresh will going to take. Tanvir is emerging new photographer. Madhu, irna line ge baka adda hotule. Tanvir porondulleru. Ade. Ola itna barledala madhyamedala order baretna Tanvir barte. At the same time, I would like to invite the person one who did a great job to get a fantastic live coverage of this prestigious Sauhardha Trophy 2023. The big hand for 10 media. Devadi 10 media da ಮಾಲಕರು ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಶೋಕ್ ಇವರು ಸ್ಮರಣಕ್ಕೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ದ ಟೋಕನ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್, ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಜಾಬ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 10 ಮೀಡಿಯಾ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ, ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್, ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್, thank you very much for your contribution for the success of this cricket tournament. So before we are going to the one of the golden moment of this cricket tournament, of course Torpedoes Khana, the waiting for that moment. But before that, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ಒಂದು ಕಣ್ಮಣಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸುರೇಶ್ ಬಿಎನ್ ಇವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಫಾಜ್ ಇವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇವರ ಒಂದು ಹೆಸರು ಅಚ್ಚಲಿದೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಉಳಿಬೇಕೆಂಬ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರದಿಂದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಅವರು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಂದ್ಯಾಟ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಕೂಡ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಬಿಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಅಲ್ಫಾಜ್ ಫಾರ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಫೈನಲ್ ವಿಜೇತ ತಂಡವನ್ನು ಕರೆಯುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ 1 ನಿಮಿಷದ ಮೌನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಾವು ನಡೆಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸುರೇಶ್ ಬಿಎನ್ ಇವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವರು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿಯ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಚ್ಚಳಿಯದೆ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ 1 ನಿಮಿಷದ ಮೌನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮೂಲಕ ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. 1 minute prayer for ಸುರೇಶ್ ಬಿಎನ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಸೊ ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಥ್ರೂ. Every team's dream is that once they wanted to lift the trophy, the tournament which is organized in UCG cricket ground. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಂದ್ಯಾಟ ಜಯಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಉರುವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಜಯಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಅದು ಬೇರೆ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ದ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಉರುವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ Torpedoes Khana ಈ ಸೀಸನ್ ನ ಮೊದಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಸೊ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ Torpedoes Khana for your wonderful performance. So they deserve the champion. The way that they came into the final, defeating NM Cricketers Mangalore. In the semi-final, they defeated KCCR Kadri, and in the big final, they defeated Red Wings. So welcome all gentlemen of Torpedoes Khana, and they will go into collect medals from our chief guest. And absolutely it's going to be one of the golden moment for the winners, the champion of this prestigious Sauhardha Trophy 2023. I request all the chief guests, ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ದಯಮಾಡಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು.
A huge trophy, absolutely very attractive winners trophy. Sauhardha Trophy 2023. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಾದಂಥ ಅಶ್ರಫ್, ಅಬುಬಕರ್, ಆಶಿಕ್, ಜಾವೇದ್, ಅಜ್ಮಲ್, ಉಮೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿತರಣೆ. ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೆಸ್ಟಿಜಿಯಸ್ Sauhardha Trophy 2023 and Torpedoes Khana lifting the champions trophy. Along with that we're going to collect a cash prize of rupees 1 lakh. A huge prize money for the Torpedoes Khana. Congratulations for the winners. So here you go, the champion of this Sauhardha Trophy 2023. The big hand for all the players of Torpedoes Khana. మళ్ళీ నిక్లే కదా మరి ముందులే అంతే పిరాడు aku చెప్పే ఆయన చెప్పేది అవుల్ ఖాళీ Thank you very much. Congratulations, Torpedoes Khana to become the champion. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. Run.